सकल लोक सहुने वंदे, सकल लोक सहुने वंदे। निंदा ना करे के नीरे, निंदा ना करे के नीरे। बाज काज मना निश्चल राखे, काच मन निश्चल राखे। धन धन जननी तेनी रे, वैष्णव जन तो तेने कही। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी। पर स्त्री जी, Your beliefs become your thoughts become your words become your actions become your habits become your values become your destiny. Hello everyone, a very pleasant good afternoon to you. This is Avinash Sharma from BA History Honours 3rd year on behalf of SHASWAT History Society of Satyawati College, University of Delhi, welcomes you all to the very first and auspicious national webinar of the academic year 2020-21. Hello everyone, this is Himang from BA History Honours 2nd year Satyawati College, University of Delhi. We both are here as panelists for today's national webinar on Gandhian values past and present. Now, before beginning the webinar, there are few guidelines which I request every participant to adhere to. First of all, participants are requested to kindly keep themselves mute until asked to do otherwise. Participants are also requested to pen down their questions for speaker in the chat box along with their names and the name of speaker whom they want to ask the question. And please note that the only selected questions will be answered by our speakers. Participants are also requested to be here with us till last because feedback link will be generated at the end of the session from which all of you can get certificates. Now for everyone here, I would like to present a brief background about our college. Satyawati College was established in 1972. It is a constituent college of University of Delhi. It is acclaimed for its contribution in quality teaching, academics, and above all, service to nation building process. The college is known for its dynamic societies, which are engaged in nurturing intellectual, aesthetic, and cultural pursuits, which are prerequisites for holistic development of students. Today, the college stands to meet a huge number of expectations of the society we live in. The society wants us to nurture professionals and scholars of high caliber who can offer solutions to a broad range of issues our country is facing. This requires excellence in teaching as part of process, which indeed our college offers. Therefore, our society, SHASHWAT, also aspires to be a ground for positive ideas and wide variety of thoughts. Now we would like to introduce our distinguished guests for today's session. First of all, we would like to welcome our chair for today's event, Professor Salil Misra sir, Dean School of Law, Pro Vice Chancellor, 2nd Ambedkar University, Delhi. He taught history at the Department of History and Culture, Jamia Millia Islamia, 1984 to 87. He worked as Assistant Research Officer at the Nehru Memorial Museum and Library from June 1986 to April 1987. He was invited to deliver the presidential address at the Modern India section of the 25th session of the Uttar Pradesh History Congress held at VBS Purvanchal University, Jaunpur,
15 November 2014. He has written two books, A Narrative of Communal Politics Uttar Pradesh 1937-39, Sage Publication New Delhi, and a small monograph entitled Swaraj Party, brought out by the National Book Trust November 1997. He also invited as a keynote speaker by the Department of History, Punjab University, for a national seminar on History in Times of Market Demand, 17 April 2010. Welcome, sir, and thank you for being here with us. Thank you. Thank you very much. Or to Himank. Himang, please unmute your mic. Just a second. Imam, Sure. Thank unmute you. yourself. Yeah. Sorry, ma'am. Our chief patron of the event, Dr. Nirmal Jindal ma'am, Principal, Satyawati College, University of Delhi. She has done all her higher studies starting from her BA, MA, MPhil and her PhD from University of Delhi. She has also written several books, monographs and articles for various platforms and forums. She is also associated with various professional bodies like Peace Studies Research Center, Netadi Subhash Academy, GNU and many others in this long list. Welcome, ma'am. Now, I would like to request Nirmal Jindal ma'am to say a few words. She can't get in. You have to in her. She's trying to get in, but because the capacity is full, she's not like she. Sure, ma'am. I she's would like. Yeah. I am going to ask Dhirendra to make some arrangements. Let me just Dhirendra, ask. please do the needful. You can continue, Hemang, and she will join us. And when she Okay, will be ma'am. able to join. Sure, ma'am. Now, Sure, ma'am. sure, ma'am, sure. Now we would like to introduce our distinguished speakers. Dr. Ajit Jha, sir, Associate Professor, Department of History, Satyawati College, University of Delhi. Dr. Gajendra Singh, Associate Professor, Department of African Studies, University of Delhi. Dr. Pasis Das, ma'am, Associate Professor, HOD of History, वो Sophia निर्मल Girls मैम College, ट्राई कर Ajmer. रही है ज्वाइन करने की, लेकिन वो बिकॉज कैपेसिटी फुल हो गई है इसलिए वो नहीं कर पा रहे हैं. Welcome you all and thank you for all being here with us. And our convener for today's session, Dr. Pallavi Prasad ma'am, Assistant Professor and Teacher in Charge, Department of History, Satyawati College, University of Delhi. She studied BA Honours History and MA Ancient Indian History from Indraprasth College, University of Delhi. She pursued MPhil and obtained her PhD from Department of History, University of Delhi. Her published works include a monograph titled Imperial Kusanas in Uttar Pradesh. She has contributed several research articles in national and international journals on history and related subjects. Now, I would like to request Palvi ma'am to formally invite our chief patron, chair, and other distinguished guests. Palvi ma'am. Okay, so a very warm welcome to all our participants, especially our chair, Professor Salil Mishra, our principal ma'am, who is trying to get in, but the Zoom capacity is full, so somehow she is not being able to join us. Other speakers of the day, Dr. Rajit sir, Dr. Gajendra, Dr. Persis Das ma'am, who will shortly join us. So on behalf of our History Society, I welcome you all for this national webinar on Gandhian values. Like in history, we've always been talking about the idea of time and space, which are cardinal to to our historical understanding. But what I believe is that Gandhian values, in a way, they transcend the idea of time and space, as they've been applied very, very successfully, adopted in various kinds of times and space in different kind of context, in a variety of contexts actually, which are different in like in a variety of spaces and times. The Gandhian values, they have been invoked during various independent movements all over the world, the American Civil Rights Movement, the Chipko Andolan, and more recently the movement led by Anna Hazare,
the India Against Corruption movement. This is a proof of the efficacy of Gandhian values. But the sad part is that while like most of us try to appropriate Gandhi's legacy and we try to own the legacy of Gandhi, what we fail at doing is appropriating Gandhian values. So I would just want to hand over this entire session to our chair, Professor Salil Mishra, and I'm sure that the lectures today would kind of enlighten all the participants about Gandhian values and their relevance for like relevance in the past and for the present as well. Thank you. So, over to you, sir. Thank you, Dr. Prasad. I'm very happy that I was given this opportunity to chair this very important session on Gandhian values, their contemporaneity, contemporary relevance, and it's absolutely rightly pointed out that Gandhi's life, his ideas actually transcend constraints of time and space. So they have a certain universality across time and space. And today we have three important speakers who will pick up three dimensions of Gandhi's ideas. And I think the first speaker is Dr. Ajit Jha. He is, I believe, speaking on Gandhi and religion. So I guess without wasting any time, I would, shall I invite Dr. Ajit Jha? So I would like to invite Dr. Ajit Jha to give us his ideas, to take about 30 minutes and tell us about Gandhi's ideas on religion. Ajit Jha. Alvi, any guidance about language? So since you know that most of like a lot of our students come from the Hindi section, so it would be better that if you can be bilingual. Otherwise, it's up to the. Okay, then I will try to speak as much as possible in Hindi, and we may request here to speak only in English, and I hope some of the speakers may speak in English as well, so that there can be some balance. As this webinar already open, and most of us know Gandhi is probably most well-known personality in human history. But he is much misunderstood about his ideas, about his politics, about his actions. And Gandhi's religious ideas are no exception in this respect. When we talk of religion, generally we intermingle many concepts and we think that these all are one and same thing. Today I won't waste much of my time or your time in dealing with concepts, but we should have some clarity that religion, Hindu dharma, faith, God, cosmic order, they are related, but they are separate also. And in different religious traditions and intellectual cultural traditions, we have a different meaning and understanding of the concepts also. There is no one concept of God. There are many concepts of God. So today we will try to analyze more than an analysis. We'll try to trace some of the steps of Gandhi's pilgrimage on the path of religion. There are many tensions, many contradictions, many confusions, many ambiguities, many nuances. We may not go into all of that, but we may have some sense of substantive vision and practice of religion of Gandhi. Gandhi, quote unquote, God को, ईश्वर को, भगवान को creator नहीं मानते,
ईश्वर की, गॉड की जो कई सारे कंसेप्शंस हैं, उसमें वो एक क्रिएटर है, यूनिवर्स का क्रिएटर है और आदमी का भी क्रिएटर है। बाइबल के हिसाब से, जेनेसिस के हिसाब से गॉड ने 6 दिन में सारी दुनिया का निर्माण किया, ब्रह्मांड का निर्माण किया और 6ठे दिन आदमी का भी निर्माण कर दिया। गांधी गॉड एज क्रिएटर के प्रिंसिपल को नहीं मानते थे। उनका ये मानना था, और उसकी भी एक इंटेलेक्चुअल कल्चरल ट्रेडिशन है। ऐसा नहीं है कि गांधी ने इसकी इजाद की थी, और गांधी ने बार बार ये कहने की कोशिश की अपने पूरे लाइफ में कि आई एम नॉट स्टेटिंग एनी न्यू ट्रूथ, I am simply repeating, and more than repeating, I'm trying to live the truth. तो ये भी एक परंपरा थी कि जो ब्रह्मांड है जिसमें आदमी भी है, ये ब्रह्मांड की कोई उत्पत्ति नहीं है, ये अनादि है, इसका कोई ओरिजिन नहीं है और इसका कोई एंड नहीं है। तो ये क्या है, कैसे एग्जिस्टेंस में आया, ये जानने की कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए गांधी गॉड का इस्तेमाल नहीं करते थे। पर गांधी की ये समझ थी कि ये जो कॉस्मिक ऑर्डर है, ये कॉस्मिक ऑर्डर को सस्टेन कौन करता है, और गांधी का गॉड वहां आता है। कॉस्मिक ऑर्डर को, आदमी को गॉड क्रिएट, पर ये कॉस्मिक ऑर्डर जो चल रहा है, एक रेगुलरिटी को फॉलो कर रहा है, एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ना फिजिकल यूनिवर्स कोलैप्स कर रहा है, और उनकी समझ में सोशल यूनिवर्स भी ऑन द होल कोलैप्स नहीं कर रहा है। तो कहीं न कहीं गांधी भी एक आइडिया ऑफ प्रोग्रेस को मानते थे, जो कई मायनों में आइडिया ऑफ प्रोग्रेस जो उनके कई फॉलोअर्स मानते हैं कि वो उसके बिल्कुल खिलाफ थे, ऐसा नहीं है। क्योंकि इवन जो उनका गॉड का कंसेप्शन है, वो कंसेप्शन आइडिया ऑफ प्रोग्रेस के बिना सस्टेन नहीं किया जा सकता। अब गॉड को उन्होंने, ईश्वर को उन्होंने कई तरह से समझने की कोशिश की, और ये ईश्वर के कंसेप्शन की एक प्रॉब्लम है। सभी धर्म परंपराओं में प्रॉब्लम है, गांधी के भी ट्रेडिशन में ये एक टेंशन है कि ईश्वर को समझना भी चाह रहे हैं, उसको डिस्क्राइब भी करना चाह रहे हैं, उसको एक्सपीरियंस भी करना चाह रहे हैं, पर साथ में ये भी मानते हैं, या कुछ लोग तो ये दावा कर सकते हैं कि वो जानते हैं कि he can't be described, he is beyond description, he is beyond attributes, he is beyond qualification and qualities. तो ये एक टेंशन है, और इस टेंशन को रिजॉल्व करने की गांधी ने कई तरह की कोशिश की, कई रिलीजियस कल्चरल ट्रेडिशंस का सहारा लिया, कई इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस का सहारा लिया, पर फाइनली प्रोविजनली प्रैक्टिकली वो माइक म्यूट हो गया आपका। गॉड इज ट्रूथ, और फिर उससे ट्रूथ इज गॉड, इस नतीजे पे पहुंच गए। और जब एक बार इस नतीजे पे पहुंच गए, तो ऐसा तो नहीं है कि गॉड को लेके, गॉड के कंसेप्शन को लेके उनकी टेंशन्स खत्म हो गई। टेंशन्स तो बनी रही, लगातार बनी रही, कंट्राडिक्शंस भी लगातार बने रहे, लेकिन क्या कुछ प्रॉब्लम आ रही है? कोई प्रॉब्लम?
No, No, sir. sir. Continue करिए. तो लेकिन ऑपरेशनली प्रैक्टिकली वो ट्रूथ इज गॉड इस प्रिंसिपल को उन्होंने प्रैक्टिस करने का कोशिश किया, इसको ही ज्यादा इलॉबरेट करने का कोशिश किया, इसी को ज्यादा एक्सप्लेन करने का कोशिश किया। और फिर जब ट्रूथ गॉड है तो फिर ट्रूथ क्या है, अब उसको भी अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा, किसी न किसी तरीके से उसके बारे में भी कुछ बतलाना पड़ेगा। तो ट्रूथ क्या है? ट्रूथ लव है, ट्रूथ जो है प्रेम है। और प्रेम अगर आपका ईश्वर है तो फिर और तीन चीजें बहुत फंडामेंटल हैं। तो फाइनली जो गॉड है वो कहाँ आ जाता है? गांधी का गॉड वो फाइनली आ जाता है नॉन वायलेंस में, वो आ जाता है सफरिंग में, और वो आ जाता है सर्विस में। तो इफेक्टिवली एंड प्रैक्टिकली फॉलोइंग गॉड एंड लिविंग गॉड meant for Gandhi to practice non-violence, to be always ready to suffer, and do service to the fellow beings. फिर गांधी जिस समय में गॉड की बात कर रहे थे वो एक ऐसे समय में गॉड की बात कर रहे थे जिस समय में इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में, एकेडमिक वर्ल्ड में और पॉलिटिकल वर्ल्ड में बहुत कम ऐसे लोग बच गए थे जो ईश्वर और धर्म की बात कर रहे थे। गांधी अपने जनरेशन के कम लोगों में से थे, ऐसा नहीं कि अकेले थे। टॉल्स्टॉय थे, रशिया में इसी किस्म का एक एफर्ट कर रहे थे, पर वो पॉलिटिकली एक्टिव नहीं थे, वो सोशली एक्टिव नहीं थे। और जो वो एरा था, जो वो जमाना था, जो जमाना अभी तक चल रहा है, जिसको हम एज ऑफ रीजन कहते हैं, एज ऑफ साइंस कहते हैं। और गांधी इस बात से अवेयर थे क्योंकि गांधी का एफर्ट ये नहीं था कि मैं कुछ आइडियाज को प्रोपाउंड कर दूं। गांधी का एफर्ट ये था कि कैसे समाज, कैसे देश, इंसान, ये सब मिल करके कुछ बुनियादी बातों के बारे में एक एग्रीमेंट बनाएं और इंसानियत के लिए समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। So he was in dialogue always. He was very concerned that how others would respond to him. He was not bothered by that, but he was concerned by that. He wanted a dialogue. He wanted friendship, collectivity, union of opposites. और उन्होंने कहा कि ये एज ऑफ रीजन है, इसमें जब हम ईश्वर की बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, तो जो हम कह रहे हैं वो रीजन को सेटिस्फाई करना चाहिए। इट मस्ट सेटिस्फाई रीजन, बट इट शुड नॉट सेटिस्फाई ओनली रीजन, it should also satisfy heart, because only when you appeal to the heart, only then you understand and open up inner recesses of a human mind and human personality. And this was to some extent an unique contribution of Gandhi, because the age of reason was constantly ignoring emotion and heart. Age of reason
was too mechanically applying principles of natural science to the social life and social universe. Age of reason was acceptable to Gandhi, but Gandhi was conscious of limits of reason when it comes to matter of heart. And probably we all know that. So his message was, his understanding was, love और cooperation, यही क्रिएटिव पावर्स हैं संसार में, समाज में, देश में। जो भी है सब अच्छा है ऐसा नहीं, बहुत लड़ाई है, बहुत कन्फ्लिक्ट है, लेकिन जो अच्छा है, जो यूजफुल है, जो आदमी को आगे बढ़ाता है, जो क्रिएट करता है, वो लव और कोऑपरेशन से क्रिएट करता है। उसी से परिवार चलता है, उसी का दायरा जब बढ़ जाता है तो एक नेशनल कम्युनिटी का निर्माण होता है, और उसी का दायरा और बढ़ जाए तो मानवता को फायदा होता है। लव और कोऑपरेशन का एक्सटेंशन यही सस्टेनिंग पावर है, यही क्रिएटिव पावर। तो यू कैन जस्ट ऑब्जर्व दैट फ्रॉम कॉस्मस, फ्रॉम गॉड, being true to his principles, his understanding, where he is practically reaching out. And at that level, he was open for unity for a believer or a non-believer. His doctrine, his efforts, his actions were not confined to believers or someone who believed in him. Anybody who believed in love, cooperation, non-violence could have been his partner, part of his endeavor. और पूरे हिस्ट्री के बारे में उनका यही सेंस था। ये बहुत सही सेंस है हिस्ट्री के बारे में, ऐसा मेरा मानना नहीं है। हिस्ट्री का मूवमेंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, पर इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हिस्ट्री के मूवमेंट में भी लव और कोऑपरेशन का एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल है। पर वो कब एक्टिवेट होता है, कब इफेक्टिव होता है, कब वो इफेक्टिव नहीं हो सकता है, क्यों वही इंडिविजुअल, वही सोसाइटी जो लव और कोऑपरेशन का सहारा लेती है, वही इंडिविजुअल और सोसाइटी हेट्रेड का भी सहारा लेता है, वायलेंस का भी सहारा लेती है। These are some of the questions which were not properly discussed and addressed by Gandhi. गॉड के मामले में, रिलीजन के मामले में भी, जैसे मैंने अभी आपसे कहा, गांधी was fully conscious that we are living in age of reason. साथ ही साथ वो इस बात से भी पूरी तरह conscious थे, और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और पेचीदा सवाल है, इसकी डिटेल्स में मैं अभी नहीं जाऊंगा, पर ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ईश्वर और धर्म के मामले में भी उनके लिए ह्यूमन एजेंसी प्राइमरी थी, इंडिविजुअल एजेंसी प्राइमरी थी। वो इस बात के प्रति सचेत थे और इन्होंने इसको लिखा भी है कि गॉड को हमने ही कंसीव किया, इंसान ने ही कंसीव किया। And this may be something very disturbing for the believers. That man conceived God. Whatever we know about God, whatever attributes we attach to God, all these are human conceptions basically. So, the evolution of concept of God
or for that matter, religion, is a human creation. There is no superpower, though at times Gandhi talked about omnipotence of God, but at the same time, he is conscious that many things that were happening in human world, for that, there is no definite intervention by God as a person or as a principle. So human agency was very important for Gandhi. God was conceived by human agency. So the concept of God and religion can always evolve. And if God is truth, then in Gandhi's conception, there was no the truth. Gandhi knew no the truth. And Gandhi never accepted that anybody ever knew the truth. Truth for him was an evolving and dynamic concept. And it may be ever elusive. The truth may be ever elusive. But striving was important. More than the attainment, effort was important. And how the effort was to be made? It was through non-violence, love, cooperation, suffering, and service to the people. Gandhi was a believer. He believed in faith. He was faithful. But at the same time, he made two qualifications, even for the faith. One was that something which is known, you can experience. Something which can be explained through reason, science, you cannot deny that. Faith cannot have any role. If science has discovered laws of gravitation, then according to Gandhi, no faith can deny that. The realm of reason, realm of science, where things can be explained through reason and science, faith can't play any role in that. That is not the sphere of faith. Faith can't enter there. Faith should be justified. When you say you are faithful, you have a faith, it can't be simply your belief. That is not possible. You cannot deny science. You cannot deny reason. That is ruled out. But areas where science is of no help, where even reason is of no help, बहुत सारे दिल के मामले होते हैं. साइंस कोई मदद उसमें कर नहीं सकता. बुद्धिवाद भी उसमें कोई मदद कर नहीं सकता. जब दिल के मामले शुरू हो जाते हैं, इनर रिसेसेस के मामले शुरू हो जाते हैं, जहां साइंस की और रीजन की एंट्री नहीं है, वो इलाका है, वो क्षेत्र है जहां आस्था का काम शुरू होता है, जहां श्रद्धा का काम शुरू होता है, जहां स्पिरिचुअलिज्म, आध्यात्मिकता का काम शुरू होता है. So he has a definite two domains, separate domains, maybe interrelated sometimes, but primacy
for reason and science in certain spheres, and primacy of faith in some other spheres. तो फेथ शुरू वहां से होता है जहां साइंस और रीजन आके अटक जाते हैं, जहां मदद नहीं करते, जहां वो कहते ही नहीं है कि हम मदद कर सकते, हम बतला सकते हैं, वहां से गांधी का फेथ शुरू। These are some of the unique qualities of गांधी, इसलिए मैं आपको ये एम्फेसिस के साथ बता रहा हूं। टाइम होने लगे तो 5 मिनट पहले मुझे बता दीजिएगा। तो कॉस्मिक ऑर्डर है, गॉड है, फेथ है और रिलीजन। अब ये रिलीजन क्या है? गांधी की नजर में वो कहते हैं कि सारे रिलीजन्स, सारे धर्म मतलब जितने भी धर्म आप जानते हैं वो भी, जो नहीं जानते हैं वो भी, कभी कभी उसको धर्म कहते हैं, कभी कभी उसको धर्म नहीं भी कहते हैं। सारे धर्म, सारे रिलीजन ट्रू हैं, सच है। कोई झूठा नहीं है, कोई किसी से कम नहीं। But all religions are limited. All specific religions are limited. Hinduism is a limited religion. Islam is a limited religion. Christianity is a limited religion. सारे धर्म लिमिटेड हैं। लिमिटेड क्यों हैं? और फिर एक ह्यूमन ऑरिजिन है, एक मेटेरियल इंटरप्रिटेशन है गांधी का, जिनको मेटेरियलिस्ट माना नहीं जाता है। उनके अनुयायी तो, जिनको मैं ज्यादातर को जानता हूं, जो जीवित हैं उनको भी जानता हूं, और बहुत सारे जो जीवित नहीं हैं उनसे भी मेरा संपर्क रहा है। वो सुनेंगे तो उन्हें धक्का भी लग सकता है। गांधी कहते हैं कि रिलीजन क्या है? रिलीजन आदमी की कोशिश है ईश्वर की, जो उसने संकल्पना की है, आदमी ने जो ईश्वर की संकल्पना की, और उस संकल्पना से वो अपना संबंध कैसे बिठाता है, ये जो आदमी का प्रयास है, यही धर्म है। और अलग अलग समाजों में, अलग अलग समय में, अलग अलग समुदायों ने ये प्रयास किए। इससे धर्म की रचना हुई। अब ये सारे धर्म की रचना ईश्वरीय तत्व को समझने के लिए हुई है, गॉड को, एक्सटर्नल गॉड को नहीं। जो गॉड की जरूरत हमने महसूस की, उस गॉड को हमने क्रिएट किया अपने स्पेसिफिक एक्सपीरियंस और स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में, टाइम एंड स्पेस में और हिस्ट्री में। हिस्ट्री में अक्सर हम टाइम और स्पेस की बात करते हैं, पर हर टाइम और स्पेस की अपनी हिस्ट्री भी होती है, एक थर्ड डायमेंशन भी है, उसमें हमने क्रिएट किया। तो वो ट्रू है क्योंकि आदमी एक हायर प्रिंसिपल्स, एक सुप्रीम प्रिंसिपल्स की तरफ स्ट्राइव कर रहा है, तो वो ट्रू एफर्ट है, वो ट्रू होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं होगी। लेकिन वो अपनी स्पेसिफिसिटी से कंडीशन भी है। वो स्पेसिफिसिटी बदलेगी, ट्रेडिशन डेवलप होगा, और जब ट्रेडिशन डेवलप होगा तो गॉड और रिलीजन भी डेवलप होगा। ये इसका लॉजिकल इम्प्लीकेशन है। गांधी जो है, जो वो देख रहे हैं प्रैक्टिस में, जो बहुत समय से चला आ रहा है, उसके एसेंस को और उसके ट्रुथ को समझने की कोशिश करते हैं। वो कोई एक नैरो, लिमिटेड, पर्सनल पर्सपेक्टिव लेकर के जो भी उससे अलग है उसको क्रिटिसाइज करना, कंडेम करना, ये मेथड उन्होंने लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में कभी इस्तेमाल नहीं किया।
तो गांधी ने देखा कि कई जगह पर्सनल गॉड भी हैं और इम्पर्सनल गॉड का भी कंसेप्शन, कई जगह रिचुअलिस्टिक रिलीजन भी है, रिचुअलिस्टिक स्पिरिचुअलिस्ट भी हैं, नॉन रिचुअलिस्टिक स्पिरिचुअलिस्ट। तो एसेंशियली ये सब ट्रू होंगे, फंडामेंटली ये सब ट्रू होंगे। ये गांधी का की एक इंस्टिंक्टिव अंडरस्टैंडिंग थी, इसलिए वो इस डिबेट में नहीं पड़े। उन्होंने कहा ठीक है, पर्सनल गॉड भी है, इम्पर्सनल गॉड भी है। जो पर्सनल गॉड है वो ज्यादा पॉपुलर है, पॉपुलर लेवल पर है। और हिंदुइज्म में तो ये बात हम सब आसानी से जानते हैं, पर्सनल गॉड की बात, क्योंकि अक्सर ईश्वर की आराधना मंदिरों और मूर्तियों के माध्यम से की जाती है। लेकिन ये जो लेबल है रिलीजन का, पर्सनल गॉड का, वो गांधी यहीं तक कन्फाइन नहीं करते हैं। वो जो तरह तरह के रिचुअल्स हैं, तरह तरह की प्रार्थना है अलग अलग धर्मों में, उसको भी मोटे तौर पर वो रिलीजन के उसी लेवल पे रखते हैं, पॉपुलर लेवल पे रखते हैं, क्योंकि ये सब पॉपुलरली फॉलो की जाती हैं, पॉपुलरली प्रैक्टिस की जाती है। ये रिलीजन का और ईश्वर का एक रूप है, एक फॉर्म है। लेकिन वो ये भी मानते हैं, एंड अगेन दिस इज ए वेरी नुआंस्ड एंड वेरी सोफिस्टिकेटेड अंडरस्टैंडिंग, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर। फिर वो भी ये भी कहते हैं कि इन प्रार्थनाओं, इन पूजाओं के ऊपर एक आध्यात्मिक धर्म है, एक हद तक एक शाश्वत और सनातन धर्म है, जो इन विशिष्ट धर्मों से बंधा हुआ नहीं है। उनकी पूजा पद्धति से, उनकी प्रार्थना पद्धति से किसका कौन पर्सनल गॉड है, इससे वो बंधा हुआ नहीं है। और उनके हिसाब से उनको ऐसा लगता है कि ये जो स्तर है आध्यात्मिकता का, ये स्तर धार्मिक साधना में एक ऊंचा स्तर है। लेकिन वो ये कहते हैं कि ये ट्रांजेंट करता है स्पेसिफिक रिलीजन को, पर सुपरसीड नहीं करता है। वो कभी ये नहीं कहते हैं कि ये जो पॉपुलर रिलीजन है, ये जो पॉपुलर प्रैक्टिसेस है, इनको आप छोड़ दीजिए। ये पॉपुलर रिलीजन और पॉपुलर प्रैक्टिसेस करते हुए अगर आप स्पिरिचुअल ट्रुथ में ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, ज्यादा समझ सकते हैं, उससे अपनी जिंदगी को संवार सकते हैं, तो वो आपके लिए और बेहतर होगा। पर ये दो अलग अलग नहीं है, इन दोनों में क्लैश नहीं है, इन दोनों में कोई द्वंद्व नहीं है। वो इन दोनों में से किसी एक को चुनने के लिए नहीं कहते, लेकिन वो ये जरूर चाहते हैं कि जो स्पेसिफिक धर्म है, वो हिंदू हो, इस्लाम हो, ईसाईयत हो, उन्हें अपनी इस सीमा को समझना चाहिए और ये नहीं समझना चाहिए कि ये धर्म और ईश्वर की अंतिम संभावना है। धर्म और ईश्वर की खोज, आध्यात्मिकता की खोज, नैतिक जीवन जीने का प्रयास, ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ये तार्किक तौर पर गांधी की धर्मों की समझ से हम ग्रहण कर सकते हैं। और उस स्तर पर, उस हायर लेवल पर, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था, ट्रुथ, नॉन वायलेंस, लव, सफरिंग, सर्विस, उस हायर लेवल पर मोरालिटी इंपॉर्टेंट है, थियोलॉजी इंपॉर्टेंट नहीं। वो थियोलॉजी के खिलाफ नहीं थे, वो थियोलॉजी की जरूरत को भी महसूस करते थे, पर उनका ये कहना था कि अगर थियोलॉजी, अगर धर्मशास्त्र
केवल धर्मशास्त्र है, लिविंग फेथ नहीं है, जीवन जीने का साधन अगर नहीं है, अगर वो लाइफ की क्वालिटी को इंप्रूव नहीं करता है, अच्छी जिंदगी क्या होती है, मैं सुबह से शाम तक जो जिंदगी जीता हूं वो मेरी जिंदगी बेहतर कैसे होगी, अगर वो ये बताती नहीं है थियोलॉजी, तो फिर वो थियोलॉजी तो अनट्रुथ है। अनट्रुथ के कई एजेंट हैं, असत्य के कई एजेंट हैं। थियोलॉजी जिसका दावा है कि वो धर्मशास्त्र है, ईश्वर को समझने और समझाने का शास्त्र है, अध्यात्म और व्यवहार को समझाने का शास्त्र है, अगर वो लिविंग रिलीजन नहीं है, अगर उसका व्यवहार नहीं किया जा सकता है, तो फिर वो ट्रुथ नहीं है, उस थियोलॉजी की कोई वैल्यू नहीं है। और फिर आगे कहते हैं गांधी, अब इसमें आइडियाज और प्रैक्टिस का इंटरप्ले देखिए कि स्पेसिफिक रिलीजन स्पेसिफिक है, लिमिटेड है, लेकिन अपनी लिमिटेशन में, अपनी स्पेसिफिसिटी में वो ईश्वर के, ट्रुथ के, धर्म के कुछ महत्वपूर्ण तत्वों को किसी भी दूसरे से ज्यादा उद्घाटित कर सकते हैं, किसी दूसरे से ज्यादा विकसित कर सकते हैं। हर धर्म की अपनी विशिष्ट खूबी हो सकती है, केवल लिमिटेशन नहीं है, केवल सीमा नहीं है, सीमित होते हुए भी उसकी विशिष्ट खूबियां हो सकती हैं। और उसमें उदाहरण के लिए वो कहते हैं कि जैसे अगर ईसाई धर्म की बात करें तो प्रेम, क्षमा, सफरिंग, इसको जितना स्पष्ट तौर पर, जितनी शिद्दत के साथ ईसाई धर्म ने रखा है, ये शायद किसी दूसरे धर्म ने नहीं रखा। उसी ढंग से कहते हैं वो कि ईश्वर एक है, ईश्वर और इंसान के बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, और समता, ये जो मूल्य हैं, जो जरूरी मूल्य बोले हैं, ये इस्लाम ने जिस ढंग से उद्घाटित किया है, इस्लाम ने इसका जिस ढंग से व्यवहार किया है, वो शायद किसी दूसरे धर्म ने नहीं किया। सर, हाँ, टाइम सर रनिंग आउट। कितना टाइम है? 5 मिनट्स में कंक्लूड कर। तो मैं 5 मिनट्स में कंक्लूड कर रहा हूँ। ओके सर, थैंक यू सर। और इसी क्रम में वो कहते हैं कि हिंदू धर्म ने सगुण और निर्गुण, पर्सनल और इम्पर्सनल गॉड, नॉन अटैचमेंट, लेकिन नॉन अटैचमेंट के साथ एक्टिविटी, जिसको गीता में निष्काम कर्म कहा गया है, एक्टिविटी, एक्शन, इंटेंस एक्शन विदाउट डिजायर, सभी जीवों की एकता, अहिंसा, ये इन मूल्यों के बारे में हिंदू धर्म ने जितना विकास किया है, और अन्य भारतीय धर्मों की मदद से, जो भारत में पैदा हुए धर्म थे उनकी मदद से, इतना दूसरे धर्मों ने नहीं किया। तो हर धर्म सीमित है, पर हर धर्म का की अपनी विशिष्ट उपलब्धि भी, जो उनके सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों से पैदा हुई है या उनकी साधना से पैदा हुई। तो मनुष्य के लिए 20वीं 21वीं शताब्दी में मनुष्य का ये दायित्व है कि वो, क्योंकि वो जानता है आज दूसरे धर्मों के बारे में, दूसरे सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में, वो आसानी से उसको समझ सकता है, ग्रहण कर सकता है। तो मनुष्य के लिए जरूरी है कि अपने धर्म पर, अपनी धार्मिक सांस्कृतिक परंपरा पर टिके रहते हुए वो सभी धार्मिक सांस्कृतिक परंपराओं में जो बेहतर चीजें हैं
उसको वो ग्रहण करें। इसलिए धर्मों के बीच में कोई हायरार्की नहीं हो सकती, ये संभव नहीं है। कोई धर्म ऊंचा नीचा नहीं हो सकता। और ये वो वार्निंग भी देते हैं कि सभी धर्मों में, क्योंकि आफ्टर ऑल रिलीजन के बारे में जो भी हम जानते हैं वो मनुष्य के माध्यम से जानते हैं, दूसरा कोई जरिया नहीं है हमारे पास जानने का। तो सभी धर्मों में काफी गड़बड़ियां हैं और उसमें बहुत सुधार की जरूरत है। और आप सब जानते हैं कि कैसे उन्होंने जीवन भर हिंदू धर्म सुधारक की एक भूमिका निभाई, और जो उस समय की अछूत प्रथा थी, जो आज भी कई रूपों में जारी है, उसके खिलाफ जीवन भर उन्होंने संघर्ष किया। और कहा, अगर उनसे कोई कहेगा कि हिंदू धर्म अछूत प्रथा को मानता है और उनको हिंदू धर्म से निकाल देने का भी कोई फैसला करे, तो भी वो किसी भी हालत में अछूत प्रथा को मान नहीं सकते। अगर शास्त्र सचमुच ये कहते हैं कि अछूत प्रथा सही है, तो ये सारे शास्त्र झूठे हैं। ऐसे शास्त्रों को मानने की कोई जरूरत नहीं। धन्यवाद। Thank you, sir, for Thank you, Ajit valuable sir, for words. giving us your valuable time. Thank you so much, sir. Chief patron of the event, Dr. Nirmal Jindal ma'am, is here with us. She is the principal of Satyawati College, University of Delhi. She has done all her higher studies, starting from her BA, MA, MPhil, and her PhD from the University of Delhi. She has also written several books, monographs, articles for various platforms and forums. She is also associated with various professional bodies like the Peace Studies Research Center, Netaji Subhas Academy, JNU, and many others in this long list. Now, I would like to request Nirmal Jindal ma'am to say a few words. Ma'am. Avinash, I'm not Avinash. sure if she's there. I think she is here. Avinash, I think there is some connectivity issue with her. Yeah, there Please is continue. connectivity issue. So Please continue. let's call the next speaker. Speaker. Okay, ma'am. Now we would like to invite our next speaker, Dr. Gajendra Singh, Associate Professor, Department of African Studies, University of Delhi. He completed his graduation from JS Degree College, CCS University, Meerut. He completed his post-graduation from SD College, Ghaziabad, UP. He completed his MPhil and PhD from Department of African Studies, University of Delhi. He taught as an assistant professor in the Department of History, Satyawati College, University of Delhi. Presently teaching as an associate professor in the Department of African Studies, University of Delhi. He also won Dr. B.R. Ambedkar National Award for Teaching. Well, I'm excited to let you all know that in today's session, he is going to deliver a lecture on the topic Gandhi in Africa. So now I'm thrilled to invite and request the honor of his presence to our honorable speaker, Dr. Gajendra Singh, to share his knowledge with us, for us, which we all have been excitedly waiting. Dr. Gajendra, sir. हेलो, आप सुन पा रहे हैं मुझे? Am I audible? Yes, sir. You are audible. Yes, sir. मेरा फोटो आ रहा है क्या? एक्चुअली मेरे लैपटॉप में प्रॉब्लम हुई तो मैं मोबाइल से ही ज्वाइन कर पा रहा हूँ। Yes, sir. कार्ड आ रहा है। अभी फोटो आ रहा है? यस। तो Yes, sir, आ रहा है। प्रिंसिपल सत्यवती कॉलेज मॉर्निंग के प्रिंसिपल डॉक्टर निर्मल जिंदल, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री की टीआई पल्लवी मैम, डॉक्टर अजीत झा सर और सभी स्टाफ को और स्टूडेंट्स, और आज की जो नेशनल डे है इसमें स्पीकर और हमारे जो चेयर कर रहे हैं सर, उन सभी को मैं नमस्कार करता हूं। और मैं अपनी बात शुरू करता हूं क्योंकि टाइम के बारे में पहले से ही इंस्ट्रक्शन मिली हुई है कि 30 मिनट से ज्यादा का ना लेक्चर हो। तो साथियों, मैं अपनी बात शुरुआत करता हूँ कि महात्मा गांधी जी का जो जीवन है, भारत में जो गुजरा बाल्यकाल काल की अवस्था में जो एजुकेशन प्राप्त की, उसके बाद में फिर हम साउथ अफ्रीका चलेंगे। तो 2 हिस्सों में मेरी बातें रहेंगी।
तो मैं शुरुआत करता हूँ। गांधी जी के बारे में वैसे तो कुछ भी बोलना और कहना सुनना इतना आसान नहीं है। गांधी जी को जितना पूरे विश्व में पढ़ा गया है, पूरे विश्व में जितना लिखा गया है, पूरे विश्व में जितना छापा गया है, उतना शायद किसी और दूसरे शख्सियत के साथ में हुआ हो ऐसा। लेकिन फिर भी मैं चूंकि गांधी के ऊपर एक्सपर्ट नहीं हूँ, जितना भी मैंने गांधी को पढ़ा है, जाना सा है, मैं वो सब बातें आपके साथ शेयर करूंगा। तो साथियों, गांधी जी के बारे में जैसा हम जानते हैं कि 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में इनका जन्म हुआ, और इनके तो दादा परदादा जी थे हरजीवन राय दास गांधी जी। हम ये जानते हैं कि इनका जन्म पोरबंदर में हुआ, लेकिन हम ज्यादातर लोग हो सकता है कि ये ना जानते हो कि इनका जो परिवार है, इनके जो दादाजी थे, जो परदादा जी थे हरजीवन राय दास गांधी जी, वो पोरबंदर से कुटियाना नामक गांव से पोरबंदर में आकर के बसे थे। ये फैक्ट शायद हम कम लोग जानते हैं इस बारे में। तो कुटियाना लगभग पोरबंदर से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पर ये आकर के बसे पोरबंदर में। और इनके दादाजी का नाम उत्तम चंद गांधी था। करमचंद गांधी जो इनके पिताजी थे, वो बाद में उनको राजकोट का ब्रिटिश राजकोट का दीवान ने नियुक्त किया। और दीवान इसलिए नियुक्त किया कि गांधी जी राजकोट का दीवान इसलिए नियुक्त किया गया उनको कि गुजराती भाषा में और अंग्रेजी भाषा में उनकी अच्छी पकड़ थी। उनको वहां पर नियुक्त किया गया, और लगभग 7 वर्षों की बाल्यकाल की अवस्था में गांधी जी लगभग 7 वर्षों तक पोरबंदर में रहे। और ये 7 वर्ष का जो जीवन है, उसी दौरान हम देखते हैं कि अप्रैल 1869 में बाका भी जन्म, कस्तूरबा जिसे गांधी जी कस्तूर के नाम से प्यार से बुलाते हैं, उनका भी जन्म वहीं होता है। और वही लगभग मोहल्ला है, और वहां 5-7 घर आसपास के घर ही हैं। और बाप से जो 2 बड़ी बहनें हैं बाकी, वो ऑलरेडी पैदा होने के कुछ समय के बाद गुजर गई। इसीलिए बाको भी परिवार में जो उनके फादर नगर सेठ थे, अच्छे व्यापारी थे, पूर्व मेयर थे पोरबंदर के, उनको बड़ा ही लालन पालन और अच्छे से उनका देख रेख हुई। तो यहां से चलते हुए हम एक मैं कोट आपके साथ शेयर करूंगा। नरोत्तम भाई पलान गांधीवादी हैं पोरबंदर से। वो कहते हैं कि जब करम मोहनदास जी की उम्र लगभग 6 वर्ष और 7 वर्ष के बीच में थी, तब उनकी प्राथमिक शिक्षा जो यहाँ हुई थी, उसमें गांधी जी ने काखा गा और 1, 2, 3 की जो शुरुआती शिक्षा है वो यहाँ प्राप्त की। और यही वो दौर था जब गांधी जी और कस्तूरबा दोनों मिलकर साथ भी खेले। यहाँ पर चाहे वो कंचे का खेल है, टट्टू का खेल है, या एक पैर पर खड़े होकर चलने वाला खेल है, वो सारा का सारा खेल बाके साथ यहाँ मोहनदास जी ने खेला। और जब उनकी उम्र 7 वर्ष हुई, तो ये पूरा का पूरा परिवार यहाँ से राजकोट शिफ्ट हो गया। राजकोट में शिफ्ट होने के बाद, राजकोट और पोरबंदर की दूरी लगभग 200 किलोमीटर की डिस्टेंस है दोनों शहरों के बीच में। और जब भी ये परिवार पोरबंदर आता था, तो एक सकट उस दौरान चलता था, उस जिसको हम बैलगाड़ी भी कह सकते हैं। 5 दिन लगते थे आने में पोरबंदर वहां से। तो बीच बीच में वो अपने इस घर के को देखने के लिए बीच बीच में पूरा परिवार आता था, जिसका नाम कीर्ति मंदिर था। और ये यहाँ से जाने के बाद में ये परिवार जब राजकोट में शिफ्ट हुआ, तो राजकोट में हम देखते हैं कि गांधी जी का जो बचपन है, गांधी जी बेसिकली, मैं ये सारी बातें इसलिए शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ साथियों, कि जो दक्षिण अफ्रीका के हमारे साथी शिक्षकगण हैं, हिस्टोरियंस है, वहां के जो गांधीवादी लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि आपने तो हमें मोहन दिया था, आपने तो हमें मोहनदास दिया था, उसको हमने महात्मा बना करके वापस भारत को दिया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि वो लोग जो ये कहते हैं कि हमने महात्मा बनाया, वो महात्मा बनने की जो उनकी यात्रा है,
उस यात्रा में भारत का या मोहनदास जी का जो बचपन है उसमें ऐसे क्या क्या ऐसी विशेषताएं थी जिनको हम देख करके कह सकते हैं कि वो महात्मा से संबंधित गुण बचपन से ही एडॉप्ट कर रहे थे। घर परिवार में भी वो चीजें देख रहे थे। इनको प्यार से मोनिया घर वाले बुलाते थे। और यहां से जब वो राजकोट गए तो अल्फ्रेड हाई स्कूल में इनका एडमिशन हुआ। और इसी दौरान जो हम देखते हैं कि किस तरह से एक बार एक स्कूल में जो इंस्पेक्शन करने के लिए अधिकारी आते हैं वो लोग आए। अब क्लास में टेस्ट चल रहा था। मोहनदास जी के हिस्से में किसी कैटल की स्पेलिंग आई कि आपको ये लिखना है। अब इनसे वो स्पेलिंग नहीं लिखी गई। जब वो स्पेलिंग नहीं लिखी गई तो इशारे ही इशारे में टीचर ने कहा कि आप बगल में जो बाजू में लड़का बैठा है तुम्हारे, तुम मोहनदास उससे हेल्प ले लो, उससे इशारे इशारे में वो पूछ लो और स्पेलिंग को ठीक कर लो ताकि हमारी क्लास का जो है बेइज्जती ना हो और हम सबका अच्छा हो जाए सबका इसमें। लेकिन मोहनदास जी ने ऐसा नहीं किया। और बाद में टीचर ने जब वो इंस्पेक्शन हो गया, बाद में टीचर ने उसको मोहनदास जी को डांट भी पिलाई और गुस्सा भी किया। तो मोहनदास जी बोले कि जितना मुझे आता था ईमानदारी से वो मैंने लिखा। मैं अगर किसी अपने दूसरे साथी से देख करके चीटिंग करके लिखता तो वो मुझे कबूल नहीं था, वो मुझे खुद अच्छा नहीं लगता। तो ये जो गुण है कि दूसरों के साथ चीटिंग नहीं कर रही। और जो गांधीवादी नरोत्तम भाई गांधीवादी जी है वो कहते हैं कि अपने स्कूल से अपने घर के बीच में जब आने जाने के रास्ते में कहीं कोई कांटे पड़े हैं, कोई पत्थर पड़ा है, कोई लकड़ी पड़ी है, उन सबको भी गांधी जी उठा करके साइड में रख देते थे। और बचपन से ही वो साफ सफाई के प्रति जो उनकी लगन थी, जो सोच थी। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि किस तरह से जब हम महात्मा की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि महात्मा कोई जादू की छड़ी से इमीडिएट दक्षिण अफ्रीका में जाकर के मोहनदास जी बन गए। ये बचपन से उनके अंदर ये आदतें रही। और परिवार जो था उनका, वो परिवार तो इतना धार्मिक था। वहां वैष्णो मंदिर बगल में था, घर में भी प्रार्थनाएं होती थी। और एक दिन तो देखिए बचपन का बालकाल की एक घटना उनकी बताते हैं नरोत्तम भाई पलान जी कि जो देवता घर में जिनकी पूजा होती थी उनको उठा करके साइड में रख दिया और योगासन में मोहनदास जी खुद ही वहां आले में बैठ गए। और घर वाले लोग इतने परेशान हुए कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, ये लड़का बहुत शैतान है, इसको कैसे रास्ते पर लाया जाए। धीरे धीरे ये सब चीजें चलती रही और आगे चल के एक और डिस्टेंस को मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं कि जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते भी हैं। और ये मैंने भी राज्यसभा टीवी चैनल पे एक बार ही सुना कि मोहनदास जी अपने जो स्कूली शिक्षा थी उस दौरान अच्छे खिलाड़ी भी थे, विशेष रूप से क्रिकेट के खिलाड़ी। रणजीत सिंह जिनके जो भारत में क्रिकेट के संस्थापकों में जिनका नाम माना जाता है, उन्होंने अपने एक दोस्त को एक बार लिखा कि आप जो है अगर आपकी स्कूल की टीम अल्फ्रेड हाई स्कूल के बच्चों के साथ खेलने के लिए जा रही है तो वहां एक लड़का है पतला सा लंबा था, उससे बच के रहना, वो बहुत ही तेज गेंद फेंकता है। तो ये इस तरह का जो कोट है हमें ज्यादातर कहीं लिखित में नहीं मिलता है। तो ये उनका खेलों के प्रति भी महात्मा गांधी जी का हमें लगाव दिखाई देता है। तो ये तेज गेंदबाज के रूप में फिर एक बारी और 13 वर्ष की आयु में मोहनदास जी का पोरबंदर आना हुआ, जब उनका लगन हुआ, जब उनका सगाई हुआ मोहनदास जी के साथ में। ये बालकाल की उम्र थी और उस दौर में जब इनका शादी हुई यहाँ से, और शादी के बाद में फिर ये लोग दोबारा राजकोट गए। राजकोट के बाद में यहाँ से पूरे परिवार, चूंकि धनाढ्य परिवार था, आमदनी अच्छी थी, दीवान के पद पर इनके पिताजी थे, तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। भाव जी जो इनके परिवार के एक दोस्त थे, उन्होंने सलाह दी कि गांधी जी को हमें लॉ की डिग्री करने के लिए हमें लंदन भेजना चाहिए। और साथियों, लंदन की दूरी उस दौरान, अब पहले 7 समुंदर पार को अच्छा नहीं माना जाता था। हम देखते हैं कि किस तरह से जो करमचंद जी का परिवार था, ये एक परिणामी परिवार था। ये मैं बताता चलूं कि वैष्णव परिवार में ये उप संप्रदाय, परिणामी संप्रदाय, जिसमें
ये कस्तूरबा का परिवार भी और यहाँ पुतलीबाई का जो परिवार, पुतलीबाई बेसिकली जो जामनगर के पास में एक लालपुर जगह है वहां की रहने वाली थी। तो ये दोनों परिवार, कस्तूरबा का परिवार भी और पुतलीबाई जी का परिवार भी, ये दोनों परिवार ही परिणामी संप्रदाय को बिलोंग करते थे। और परिणामी संप्रदाय में ऐसा माना जाता है कि कुरान और गीता की प्रतिलिपियों का जो अनुवाद है उसको मंदिर में रख करके उनका दिया ज्योति बत्ती प्रार्थना की जाती है। तो ये जो धार्मिक गतिविधियां हैं परिवार की, इन सब का मोहनदास जी के जीवन पर बचपन से ही एक दो घटनाएं और हैं, आगे चलते हैं, जिनमें हम देखते हैं कि राम कथा, उस दौरान एक नाम आया राधा महाराज। राधा महाराज जी से इनका परिवार राम कथा सुनने के लिए जाता था, तो साथ में मोहनदास जी भी जाते थे। एक हरिश्चंद्र नौटंकी आई, वो नौटंकी को देखने के लिए भी पूरा परिवार गया, तो उसका भी महात्मा गांधी जी के मोहनदास जी के जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ा। एक और श्रवण कुमार जी के बारे में कि कैसे माता पिता की सेवा की जाए, और इवन जब कबा गांधी जो इनके पिताजी करमचंद गांधी जब बीमार हुए तो इन्हीं के पास जिम्मेदारी थी कि उनकी कैसे मरहम पट्टी की जाए, कैसे उनको दवा गोली दी जाए। वो लगातार लंबे समय तक उनके पैरों को दबाते रहते थे सेवा भाव से। तो ये मोहनदास में ये जो सेवा भाव है, जो बड़ों के प्रति आदर है, जो संभाव है, जो धर्म के प्रति नैतिकता, जो लगाव है, वो बचपन से ही पनप रहा था। और ये चीजें बापू के बारे में आगे देखते हैं कि किस तरह से यहाँ से निकलते हुए अब जब लंदन जाते हैं। साथियों, लंदन का जो बॉम्बे बंदरगाह से लंदन पहुंचने तक का जो समय है जहाज से, वो 6 हफ्ते का था। ये लंबा समय आप समझ सकते हो कि कितनी लंबी दूरी थी। साथ ही साथ मैं बताता चलूं, हो सकता है कि दिमाग से निकल जाए, कि बॉम्बे से डरबन का जो बंदरगाह है वहां का भी जो दूरी है 4700 कुछ नॉटिकल माइल्स की दूरी है, जहां एक तरफ से जहाज जाने में 18, 17 से लेकर 23, 24, 25 दिन तक लगते थे। अगर जहाज में, अगर उस दौरान समुद्र में कोई तूफान आ गया तो जहाज की स्पीड भी कम हो जाती थी, तो और ज्यादा समय लग जाता था। तो ये जो चैनल है बॉम्बे से लेकर अरेबियन सी से इंडियन ओशन से मोजाम्बिक चैनल, और मोजाम्बिक चैनल से होता हुआ जहाज फिर डरबन पहुंचता था। ये तो एक ये लंबा, आप सोच सकते हो कि उस दौर में गांधी जी जब लंदन गए 7 हफ्ते का समय जाने में लगता था। कितना लंबा समय, जाने के बाद इतनी आसान नहीं थी शिक्षा को ग्रहण करना। वहां उस दौर में जब उन्होंने 1888 की बात है, 91 तक ये उनकी डिग्री चली और वहां भी उन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया। लेकिन उस दौर में पहला नाम जो हम देखते हैं गांधी जी के पास, एक नाम है जिसका नाम है हेनरी डेविड थॉरो। ये अपने लंदन में जब लॉ कर रहे थे उस दौरान भी इन्होंने इस किताब को पढ़ा। मैं आपको इसकी फोटो दिखाता हूँ, किताब शायद आपको मिल जाए। मैं अपने जो हमारे विशेष रूप से स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी उन्हें आने वाले समय में कभी टाइम मिले तो वो कोशिश करना। ये 2 किताबें हैं, कि कस्तूरबा की रहस्यमय डायरी नीलिमा डालमिया ने लिखी है, और एक ये किताब है, ये वाली किताब जो वेल्डन है, एचडी थोरो की किताब है ये, और एक किताब कस्तूरबा की रहस्यमय डायरी। ये अगर मौका मिले तो इनको पढ़ना, आपको गांधी जी के बारे में जानने समझने का बेहतर विकल्प मिलेगा। इसी के साथ में काठियावाड़ का एक नाम है श्रीमद रामचंद्र जी, शायद आपने सुना हो, जैन फिलोसफर और समाज सुधारक थे। गांधी जी का इनके द्वारा बताए गए जो आदर्श थे, जो रास्ते थे, जो टीचिंग थी, जो डे टू डे की लाइफ को जीने का जो तरीका था, उसको लेकर के गांधी जी बहुत प्रभावित होते हैं। और इसके बाद में जब हम आगे देखते हैं कि एजुकेशन होने के बाद गांधी जी भारत में आते हैं, और ये एक लंबी कहानी हो जाएगी फिर कि गांधी जी भारत आए, बॉम्बे में पर राजकोट में दोनों जगह रजिस्ट्रेशन किया। उनकी जो वकालत है वो बहुत अच्छी नहीं चल रही थी, लेकिन उसी दौरान एक ऐसी घटना घटी कि दादा भाई अब्दुल्ला, जिनका काम डरबन में शिपिंग कारपोरेशन शिपिंग से जुड़ा हुआ था, उनका एक केस था, साझेदारी में उनके पार्टनर ने उनके साथ धोखाधड़ी कर दी। लेन देन का जो मसला था वो गुजराती भाषा में लिखा हुआ था, गुजराती में थे लेटर्स, रजिस्टर्स, जितना भी था। अब
जब वो केस प्रिटोरिया गया तो वहां जो अंग्रेज एडवोकेट दादा अब्दुल्ला ने किया, उसने हाथ खड़े कर दिए कि ये तो गुजराती लैंग्वेज में है, ये मैं नहीं पढ़ सकता, आप किसी और ऐसे वकील को कीजिए कि जो अंग्रेजी भी जानता हो और गुजराती भी जानता हो। लेकिन अब ये इसी सर्च में मोहनदास जी के पास खबर आई, और चूंकि ये लोग दादा अब्दुल्ला भी काठियावाड़ के रहने वाले थे, और 1 साल का टर्म्स एंड कंडीशन के साथ मोहनदास जी को डरबन जाने का, इस केस को लड़ने का मौका मिला। उसमें टर्म्स एंड कंडीशन ये थी कि आपको आने जाने का, रहने का, प्लस 105 पॉइंट्स आपको मिलेंगे इस केस के लिए। और गांधी जी जब यहाँ से चले तो बाकी आंख में आंसू थे, और 2 बेटे उनके थे ऑलरेडी यहाँ पर जो राजकोट में पैदा हुए थे। तो कई बार हम देखते हैं साथियों कि हम बाके बारे में, जब गांधी के बारे में बात करते हैं तो कस्तूरबा गांधी को हम भूल जाते हैं कि बाने कितना कष्ट सहा है, पैरेलल जीवन में कितना सेक्रीफाइस किया है गांधी जी के साथ। वो कहानी में किस दिन कभी फिर मौका मिलेगा तो बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि एक ऐसा परिवार जो धार्मिक परिवार था, जो घूंघट में रहता था, और जो बोलने के लिए भी बड़ों के सामने आसानी से जबान नहीं खोलता था, ऐसा घूंघट में उनके आंसू बह रहे हैं। और महात्मा गांधी जी वहां से निकल लिए हैं बंदरगाह डरबन के लिए। डरबन में पहुंचे तो जाकर के देखते हैं दादा अब्दुल्ला जी जब जहाज से उनको रिसीव करते हैं। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है कि दादा अब्दुल्ला जी जब उनको रिसीव करते हैं डरबन में, तो वहां धक्का मुक्की हो रही है। वहां पर जितने भी गोरे लोग हैं वो उनका व्यवहार ही अजीब तरीका का है। वो रिसीव करने के लिए आए दादा अब्दुल्ला जी, तो उन्होंने देखा कि ये सब क्या चल रहा है, ये यहाँ किस तरह का व्यवहार हो रहा है। तो दादा अब्दुल्ला को उन्होंने जब बोला, दादा अब्दुल्ला बोले कि आप कुछ मत कीजिए, यहाँ पर ये भारतीयों के साथ नॉर्मल होता है ये सारी चीजें। और मैं भारतीयों के बारे में वहां बताता चलूं कि लगभग 80 से 85 हजार भारतीय उस दौरान वहां दक्षिण भारत में रह रहे थे, जिनमें से सबसे बड़ी जो संख्या थी वो गिरमिटिया मजदूरों की थी, लगभग 50,000। गिरमिटिया मजदूर कौन थे साथियों? गिरमिटिया मजदूर वो लोग थे, वो मजदूर थे जो भारत से 5 साल के अनुबंध पर दक्षिण अफ्रीका ब्रिटिश सरकार के द्वारा ले जाए गए थे। वहां खदानों में काम करने के लिए, फैक्ट्री में काम करने के लिए, वहां पर चाय के बागानों में काम करने के लिए, वहां पर कॉफी के बागानों में काम करने के लिए इनके साथ इनका 5 साल का अनुबंध किया जाता था। एक तो ये इस तरह के लोग थे। दूसरे ये लोग थे कि जब इनका 5 साल का टर्म पूरा हो गया तो जो लोग भारत आना चाहते हैं वो भारत आ सकते हैं, जो लोग वहां रुकना चाहते हैं, जो लोग वहां रुक गए हैं, वो एक ग्रुप उनका था, लगभग 20 से 25 हजार वो लोग थे। तो इसके अलावा वहां पर व्यापारिक वर्ग भी था जो लगभग 5 से 7 हजार व्यापारिक वर्ग थे। तो टोटल मिला के 80 और 85 हजार ये लोग थे। और हम देखते कि किस तरह से इस केस को लड़ने के लिए महात्मा गांधी, ये मोहनदास गांधी जी अपने आप को तैयार करते हैं। और डरबन से प्रिटोरिया जाने के रास्ते में एक स्टेशन पड़ता है पीटरमारिट्जबर्ग। 7 जून 1893 की रात को एक ऐसी घटना घटी। फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर वकील करमचंद मोहनदास जी जब यात्रा कर रहे थे फर्स्ट क्लास के डिब्बे में, इस रेलवे स्टेशन पर उनके साथ में बदतमीजी हुई। एक गोरे पैसेंजर ने कुली कहकर पुकारा। कुली के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि कुली शब्द वहां भारत में रह रहे, दक्षिण अफ्रीका में रह रहे हमारे जो भारतीय लोग थे उनको एक ये अपमानित शब्द था, एक गुलामी भरा शब्द था, एक गाली से भरा हुआ शब्द था। वो कुली कहकर पुकारते थे इन लोगों को। और आपसी डिस्कशन में मोहनदास जी ने कहा कि मेरे पास फर्स्ट क्लास का टिकट है, मैं यात्रा करने के लिए योग्य हूं। लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई, बदतमीजी हुई और रात के अंधेरे में उनको उनके सामान के सहित वहां फेंक दिया गया। उतारा नहीं गया, फेंक दिया गया। वहां अधिकारी साथियों, उन अधिकारियों ने एक ऐसा कदम उठा लिया, वो इस बात को नहीं जानते थे कि उन्होंने जो कर दिया है ये लकीर, ये हादसा आने वाले समय में 2 देशों के भाग्य से जुड़ेगा, 2 देशों की आजादी से जुड़ेगा। और वो लकीर, वो रास्ता 2 देशों को
मुकम्मल कंप्लीट इंडिपेंडेंस तक लेकर के जाएगा। और ये बाद में हुआ भी। इसीलिए मैं कहता हूं कि महात्मा गांधी जी का जो जन्म 2 अक्टूबर 1869 को 1869 को जो हम मानते हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि महात्मा गांधी जी का जन्म, मोहनदास जी का जन्म उस दिन नहीं हुआ था। असली जन्म जो हुआ था उनका, वो 7 जून 1893 को पीटर्सबर्ग स्टेशन पर हुआ था। वो पूरी रात, साथियों, अप्रैल मई जून दक्षिण अफ्रीका में भारी ठंड होती है, कड़कड़ाती ठंड होती है। मैंने साउथ अफ्रीका में मैं रहा हूँ, जोहान्सबर्ग में मैं रिसर्च के अपनी पीएचडी के सिलसिले में मैं गया हूँ, तो मैंने देखा है। तो वहां पूरी रात अंधेरे से भरे स्टेशन पर वेटिंग रूम में, जबकि गांधी जी के पास में उनके बैग में ओवरकोट था, लेकिन वो कड़कड़ाती ठंड में गुस्से से भरे हुए कांपते रहे। उन्होंने ओवरकोट को नहीं पहनना उचित समझा और ये सोचते रहे कि मेरे जीवन में ऐसा पहली बार हुआ है, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, मुझे क्या करना चाहिए, इस समस्या का क्या निदान हो सकता है, मुझे आगे क्या डिसीजन लेना चाहिए। ये तमाम बातें पूरी रात बिना नींद लिए हुए, बिना सोए हुए उनके मन मस्तिष्क में चलती रही। अगले दिन सुबह उन्होंने दादा अब्दुल्ला और रेलवे के महाप्रबंधक को तार भेजा। लोग आए, अब्दुल्ला जी के जो जानकार वहां व्यापारी लोग थे वो सब आए, आगे का अरेंजमेंट हुआ और उसके बाद में यात्रा पूरी होने के बाद प्रिटोरिया के कोर्ट में दादा अब्दुल्ला का जो केस है गांधी जी ने आर्बिट्रेशन में डाला और वहां से उस केस में गांधी जी को जीत मिली। ये एक पड़ाव है। अब गांधी जी का जो असली जीवन है वो यहाँ से शुरू होता है, जिसके बारे में हम नॉन वायलेंस की बातें भी करेंगे, सत्याग्रह की भी बातें करेंगे, प्रेम की बातें, ट्रुथ फोर्स की बातें भी हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 2-3 नाम हैं, जल्दी जल्दी उनको मैं बता देना चाहता हूं। एक नाम है लियो टोल्स्टॉय, जिनका पूरा नाम है काउंट लियो निकोलाएविच टोल्स्टॉय। 1828 को इनका जन्म हुआ और 1910 में इनकी मृत्यु हुई। जैसा कि अजीजा सर ने भी बताया था, इनके बारे में कोट किया था। मैं ज्यादा इनके बारे में ना बताते हुए मैं बताना चाहूंगा कि इनकी कुछ किताबों के नाम है इंपॉर्टेंट। द पावर ऑफ डार्कनेस, माई कन्फेशन, वॉर एंड पीस, ये कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं। लेकिन साथियों, इनसे भी ज्यादा जो एक इंपॉर्टेंट किताब है जिसने महात्मा गांधी जी के जीवन को बदल दिया, उस किताब का नाम है द किंगडम ऑफ द गॉड इज विद इन यू। The kingdom of the God is within you। ये टॉलस्टॉय द्वारा लिखी गई ऐसी किताब है जिसको पढ़ने के बाद महात्मा गांधी जी ने खुद कहा कि मुझे नींद नहीं आई, कई रोज तक मैं ठीक से सो नहीं पाया। इसके अलावा मैंने एक किताब आपको वेल्डन बताई जो हेनरी डेविड थॉरो के द्वारा लिखी गई है। इस किताब में भी साथियों थॉरो कहते हैं कि जो हमारा नेचर है, जो विलेजेस हैं, जो पॉन्ड्स हैं, जो हमारा सराउंडिंग्स है, जो नेचर है, उसके बारे में फोकस वो करने की बात करते हैं। और इसके अलावा एक नाम और है, जॉन रस्किन। जॉन रस्किन का नाम आपने भी साथियों सुना होगा। इनके द्वारा भी 3-4 किताबों के नाम मैं बताऊंगा आपको। द स्टोन ऑफ वेनिस, द किंग ऑफ द गोल्डन रिवर, द क्वीन ऑफ एयर, ये कुछ ऐसी किताबें हैं जो जॉन रस्किन ने लिखी। लेकिन अनटू दिस लास्ट जो जॉन रस्किन की किताब है, ये किताब महात्मा गांधी जी जब इस किताब को पढ़ते हैं तो उनके मन मस्तिष्क को ये किताब झकझोर देती है। ये यहां से महात्मा गांधी जी का जीवन का जो परिवर्तन है वो आता है। एक नाम और मैं इसी में जोड़ना चाहता हूं कि किस तरह से चार्ल्स स्टीवर्ट पनवेल 1840 से 1891 के बीच में आयरिश नेशनलिस्ट पॉलिटिशियन एंड लीडर ऑफ होम रूल लीग। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये चार्ल्स स्टीवर्ट पनवेल जो आयरिश हैं, यहाँ पर एक फोनिक्स पार्क मर्डर केस हुआ था 6 मई 1882 को। हमारा शायद हमारे अजीज सर को मालूम होगा अच्छे से। डबलिन है, डबलिन शहर में फोनिक्स पार्क
मर्डर केस हुआ था, जहां पर ये चीफ सेक्रेटरी और अंडर सेक्रेटरी जैसे अधिकारियों को चाकुओं से गोद के मार दिया गया था। ये उस दौर में बहुत ही पॉपुलर हुआ। तो इससे हमारे मोहनदास जी भी अछूते नहीं रहे। और आगे चल के हम देखते हैं कि डरबन के बाहरी क्षेत्र में जो आश्रम गांधी जी के जरिए बसाया गया 100 एकड़ में, उसका नाम फोनिक्स आश्रम ही रखा गया। ये वही आश्रम था जहां पर गांधी जी कम्युनल सेटलमेंट्स की बात कर रहे हैं। सुबह 6 बजे से लेकर आपको वहां सभी तरह के सभी धर्म समाज के लोग रहते हैं, और उनको ये आदेश है कि आप सुबह निश्चित टाइम पर उठेंगे, निश्चित टाइम पे नाश्ता मिलेगा और निश्चित टाइम पे आपको ये काम करना है। और उनमें कई सारे नाम, एक नाम है इनके जो बहुत ही अजीज दोस्त थे, उनका नाम मैं लेना चाहूंगा कि हरमन कैलनबर्ट। वो बड़े इनके नजदीक लोगों में से रहे, और यहाँ पर ये गतिविधियां इनकी चलती रही। मैं इसी क्रम में आगे आपको बता दूं कि 1904 में नटाल इंडियन कांग्रेस की गांधी जी ने स्थापना की। इंडियन ओपिनियन नामक एक न्यूज़पेपर की स्थापना हुई। पहले वो डरबन से निकलता था, बाद में उसका ऑफिस फोनिक्स में शिफ्ट कर दिया गया। और इस अखबार को निकालने का मैं बताना चाहूंगा कि टाइम का अगर 5 मिनट पहले बता देंगे तो थोड़ा मुझे अच्छा रहेगा, कि इस न्यूज़पेपर का जो मकसद था प्रिंट करने का, निकालने का, वो मकसद ये था कि जो दक्षिण अफ्रीका में भारतीय रह रहे थे, गोरी सरकार, ब्रिटिश सरकार उन पर जो जुल्म ढा रही थी, उसको कैसे हम अवेयरनेस, वो सारी की सारी अवेयरनेस हम कैसे अपने हिंदुस्तानियों के पास तक पहुंचाएं, भारत के लोगों के तक पहुंचाएं, प्लस जो दक्षिण अफ्रीका में लोग रह रहे थे उन तक मैसेज पहुंचाएं, समर्थन हासिल करें, और लंदन में जो भारतीय लोग रह रहे थे उन तक भी हम ये मैसेज पहुंचाएं कि किस तरह की ज्यादतियां हमारे भारतीयों पर दक्षिण अफ्रीका में हो रही हैं। तो ये इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर जो है, इसका मकसद ये था। इसके साथ में एक और 1895 की ही वारदात को मैं चलता हुआ आपके साथ शेयर करूंगा, इमिग्रेशन लॉ अमेंडमेंट बिल। इसके तहत ये था, ये सरकार जब लेके आई दक्षिण अफ्रीका में, कि या तो 5 साल आपने अगर काम कर लिया एज ए मजदूर, गिरमिट या मजदूर वहां पर, तो या तो आप वापस भारत चले जाइए, या फिर 2 साल के लिए और अनुबंध पर रहिए हमारे साथ। अगर अनुबंध पर नहीं रहोगे तो आपको एनुअल टैक्स देना पड़ेगा, 3 पौंड आपको टैक्स देना पड़ेगा। और इसके अलावा 1906 में इसी में आगे बढ़ते हुए ब्लैक एक्ट, जिसे हम एशियाटिक ऑर्डिनेंस एक्ट के नाम से भी पुकारते हैं, और इस एक्ट को ब्लैक एक्ट इसीलिए कहा कि ये सीधा सीधा भारतीयों के जो रिकॉग्निशन थी दक्षिण अफ्रीका पर आक्रमण था। वहां पर आदेश हुआ कि किस तरह से आपको एक भारतीय को अपनी 10 उंगलियों के फिंगरप्रिंट और आई कार्ड का रजिस्ट्रेशन, अपनी पहचान का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आप निश्चित एरिया में, विशेष रूप से ट्रांस वाले एरिया में एंट्री करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। गांधी जी ने इसका विरोध किया। एच.डी. थोरो की जब हम बात करते हैं, जब लियो टॉलस्टॉय की बात, तो हम देखते हैं कि गांधी जी ने वहां 5 मिनट में कंक्लूड कर दे। अच्छा, तो थैंक यू वेरी मच। तो हम थोड़ा सा गांधी जी के सत्याग्रह पे सीधा चलते हैं कि कैसे गांधी जी ने जो 1906 में जो ब्लैक एक्ट हुआ, यहीं से शुरुआत हुई। और जो ये फोनिक्स आश्रम है, यहाँ पर ये सत्याग्रह को प्रोपाउंड किया गया, जिसमें हम देखते हैं कि किस तरह से पैसिव रेसिस्टेंट कैंपेन, और वहां टेम्पल्स में, मोसाक में, चर्चिज में जाकर के धरने प्रदर्शन, लंबा मार्च भी हुआ, और किस तरह से रजिस्ट्रेशन, हालांकि रजिस्ट्रेशन हुए गांधी जी के कहने के बावजूद भी, लगभग 13,000 लोगों में से 511 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किए, लेकिन गांधी जी के समझाने के बाद में उस रजिस्ट्रेशन को, उस आई कार्ड को इन्होंने फाड़ के आग के हवाले भी किया भारतीयों ने। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट घटना है। इसके साथ ही वहां जर्नलिस्ट के साथ में बातचीत हुई। गांधी जी
3 महीने के लिए जेल भी गए। और साथियों मैं एक बार फिर बता दूं आपको कि गांधी जी जब जेल में थे 3 महीने के लिए, वोल्ट सुट जेल में प्लस प्रिटोरिया की जेल में 3 महीने के लिए जब जेल में थे, तो लगभग आपको सुनकर भी हो सकता है हैरानी हो कि 3 महीने में गांधी जी ने 30 से ज्यादा किताबें पढ़ डाली। और उन 30 किताबों को पढ़ने में जो किताबें दोबारा से उनको पढ़ने का मन हुआ, वो यही किताबें थी, जॉन रस्किन, टॉलस्टॉय और एच.डी. थॉरो। इन किताबों को दोबारा उन्होंने पढ़ने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि किस तरह से हमारा जीवन होना चाहिए। एक और बात मैं कहना चाहता हूं आपको कि गांधी जी ऐसा नहीं है कि साउथ अफ्रीका में जाने के बाद उनको आमदनी का जरिया इतना नहीं था, बहुत अच्छी आमदनी हो रही थी, बहुत सारे केसेस लड़ रहे थे, और वहां लगभग 12 लोग असिस्टेंट उन्होंने रख लिए थे अपने वहां पर, और उनका 75,000 पाउंड वार्षिक आमदनी थी उनकी। लेकिन जब इन किताबों को पढ़ा उन्होंने, उनके जीवन में उन्होंने कहा कि ये तो कोई लिमिट ही नहीं है कि हम आवश्यकताओं को कितना भी बढ़ाते चले जाएं, ये तो हमारी कोई लिमिट ही नहीं है, कितने असिस्टेंट रख लें, कितना ही पैसा कर लें होगा, हम इसका क्या रास्ता हो सकता है। इसका आत्ममंथन हुआ। आत्ममंथन होने के बाद में ये तय हुआ कि हमें अपनी आवश्यकताओं को मिनिमाइज करना है, और जो हमारे पास बचेगा उसको हमें समानता के आधार पर अपने साथियों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। चलता चलता मैं बता दूं आपको साथियों की सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की एक बुक है, ऑल मैन आर ब्रदर्स में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कहते हैं कि गांधी जी लाइफ रूटेड इन इंडियन ट्रेडिशंस वाज ए पैशनेट सर्च फॉर ट्रूथ। ये इसके अलावा गांधी जी खुद भी कहते हैं कि इफ एनीबॉडी डेवलप द डॉक्ट्राइन ऑफ नॉन वायलेंस इट वाज लॉर्ड महावीरा, इट वाज लॉर्ड महावीरा। और एक और छोटा सा कोट 2009 का मैं ओबामा का बताना चाहता हूं कि एक बार वो जब प्रेसिडेंट थे तो उस दौरान उनका जाना हुआ अमेरिका के एक स्कूल में, तो वहां कई सारे बच्चों ने उनसे पूछा कि आप जो है जो समय में, आज के समय में जो जीवित हैं या जो मृत्यु के पार हो गए, जो महान लोग हैं, उनमें से किसके साथ आप डिनर करना पसंद करेंगे। तो बराक ओबामा जी ने कहा कि वैसे तो मेरे पास में एक बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन अगर मुझे मौका मिला तो मैं गांधी जी के साथ में डिनर करना पसंद करूंगा। इसी में नेल्सन मंडेला जी ने कहा था, जब 27 अप्रैल को 1994 में दक्षिण अफ्रीका जब आजाद हो रहा था, तो नेल्सन मंडेला जी ने गांधी जी के बारे में कहा कि गांधी जी आइडियाज हैव प्लेड ए वाइटल रोल इन साउथ अफ्रीका's ट्रांसफॉर्मेशन एंड विद द हेल्प ऑफ गांधी जी टीचिंग्स अपार्थाइड हैज बीन ओवरकम। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं और आप सबको छोड़े जाता हूं। मैं एक और चीज, छोटी सी 2 मिनट का समय और लूंगा कि गुजरात के 15वीं सदी के एक महान फक्कड़ कवि हुए हैं जिनका नाम है नरसिंह मेहता जी। उनका जो भजन है, वो भजन महात्मा गांधी जी के मन मस्तिष्क के बहुत ही करीब है। लगातार वो भारत में रहे या दक्षिण अफ्रीका में रहे, लेकिन गांधी जी हमेशा सुबह शाम उस भजन को गाते रहे, गुनगुनाते रहे। तो मैं उस भजन की मुखड़े के साथ आपको छोड़े जाता हूं, और उसका मुखड़ा ये है, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे, वैष्णव जन तो। थैंक यू वेरी मच, आपने बोलने का मौका दिया। मैं पल्लवी मैम, प्रिंसिपल मैम, अजीत सर और हमारे विवंजा सर, सभी पूरे स्टाफ का और स्टूडेंट का सभी का धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गजेंद्र जी, बहुत अच्छा। Thank you, Gajendra sir. Thank you for your valuable words and giving us your valuable time. Thank you so much, sir. आवाज नहीं आ रही आपकी। हिमांक, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही हिमांक जी।
Now we would like to invite our last speaker for today's session, Dr. Persis Das Ma'am, Associate Professor, HOD of History, Sophia Girls College, Ajmer. She completed her Masters in English Literature and in Modern Indian History. She also completed B.Ed from Regional Institute of Education NCRT, Ajmer. She also pursuing Masters in Gandhi and Peace Studies from IGNOU. She did his PhD from University of Kota, Rajasthan on Gandhian values revived in post-independence India through Indian novel, English and Hindi. She is active member of Good News Group and Women Development Cell. She presented various papers in various conferences and seminars. Well, I am excited to let you all know that in today's session, she is going to deliver a lecture on the topic Practicing the Gandhian Principles During COVID-19. So now I'm thrilled to invite and request the honor of her presence to our honorable speaker, Dr. Pasis Das ma'am, to share her knowledge with us. Dr. Pasis ma'am. Thank you so much. I hope I'm audible. Yes, Thank you ma'am. so much for the introduction. I'm really overwhelmed by the warmth and appreciation shown by SHASHWAT, Students Forum for Satyawati College. So without much ado, I would like to begin with my presentation on practicing the Gandhian principles during COVID-19. I would just share the screen, share my presentation. I hope the presentation is visible to you on the screen. Yes, ma'am. Okay, okay, thank you so much. I'll take it to the full screen. Okay. Now, my topic for today is practicing the Gandhian principles during COVID-19. Gandhi in Hind Swaraj, which he penned nearly 100 years ago, had termed the modern civilization a disease and had implored and warned us, his countrymen, not to fall victim to it. But we did not pay heed, and especially the post-independence India, Gandhi was hardly there in our personal or public life. In fact, there was a section of the intelligentsia who really took sadistic pleasure in criticizing and lampooning many of the aspects of the personal life of Gandhi, as well as some of the candid confessions that he had made in his writings and speeches. Amidst all this came 2019, the 150th birth anniversary of Gandhi. And there was hardly any organization that did not convene and organize a program remembering Gandhi and his values and teachings. We deliberated, we discussed on Gandhi, but the element of practice was missing. See, it was basically remembering, but the practice part was missing. And before the Gandhi year could officially end, we were hit by this coronavirus, and the intensity of the spread and fatality of this virus was so strong that we were placed in the situation of lockdown. I would, as a student of Gandhian philosophy, I have no qualms in using the term divine providence for this situation. The lockdown period was definitely boggling and hurting and painful for many of us, but it also proved to be a blessing in disguise that we, the legitimate science of Gandhi's intellectual and philosophical legacy, unknowingly and ignorantly practiced some of his
teachings and principles in our everyday life. Corona, or this COVID-19, it unmasked the flaws of globalization. And during this COVID period, the modern amenities of globalization have shut down. And or rather, I won't be wrong if I say that globalization and its ancillaries have failed. So it's time to have an alternate. And my presentation today would highlight some of the Gandhian principles that we unknowingly practiced, which if further adopted in future in the right spirit, in the manner advocated by Gandhi, without much modification, because we've already been modifying much of what he said and wrote right from 1947. And where have we reached? It would really benefit the majority of us, and would hopefully bring servo there. So I begin with the first slide, which is on Swachhta, sanitation. Now, Gandhi was, for Gandhi's concept of sanitation is much comprehensive. It's not simply keeping the surrounding clean, but it also includes the collection, the treatment, and reuse or recycle of industrial waste, hazardous waste. And for him, as is visible on the screen, cleanliness was next to godliness. He was really pained by the fact that we as a nation basically lack a sense of social sanitation. We look down upon the sanitation work, and because of that, we have not been able to develop a healthy system of public sanitation. And that is why Gandhi wanted all of us to be our own scavengers. Although the government of India had started the Swachh Bharat program in 2014 and had tried to inculcate the practice of hand wash from 2018, especially as part of the Poshan Abhiyan, in order to curtail stunted growth and malnutrition, still it took Corona to actually make us develop the habit of washing our hands, and it did work. It did work because as per the reports and the data that we have got from the sale hike in FMCG industry, especially related to the hygiene products like hand wash and hand sanitizers and floor cleaners. In India, where in the pre-corona phase, people who nearly 40 to 50% India did not wash hands, after visiting the washroom or before eating their meals. So we are now spending money belonging to every section. We are spending money on keeping our hands clean. And a silver lining in this dark period of COVID-19 has been that because we have finally adopted this culture of washing our hands and social distancing, that few cases of seasonal diseases have been reported. Another positive aspect is that the environment, because of the lockdown, because of the shutting down of industries and transportation, the air and water pollution plummeted. And finally, for some time at least, the sky was clear, the sky was blue, the rivers breathed back, the noise pollution level went down, and we could also see the endangered house sparrow species finally chirping near human habitation. And this photograph, which you can see over here, I mean, the Nepal Times reported that finally from the Kathmandu Valley, Mount Everest could be seen because there was a reduction in the air pollution, especially in North India. So these are some of the positive aspects that or developments that took place during the lockdown. It was again a moment of go green. Although now presently we are in the period of unlock,
there are restrictions on ritual bathing and religious fairs, and tourism is also curtailed to an extent, as well as marriage feasts. And because of this, the level of pollution has not reached back or gone back to what it was during the pre-corona phase. And the most important development has been that we as people have come to realize, the commoners have come to, the plebeians have come to realize that it is not simply the industrial emission or the vehicle emission which contributes to pollution. Our lifestyle is also a contributing factor to pollution. So I feel, as a student of Gandhian philosophy, I feel that realization is important enough. The next value or principle I'm going to talk about is Sattvic Bhojan and naturotherapy. Gandhi promoted vegetarian diet. For the simple reason, there was no religious cause attached to it, for the simple reason that our metabolic system is such that it is difficult, it is not conducive to digest animal meat, especially if our lifestyle is sedentary. There is not much physical labor in it. Then the metabolic system is such that animal meat becomes a problem in digestion. He himself had dabbled into veganism. I mean, for nearly 6 years, he abstained from milk and its byproducts. And the origin of pandemics shows that its spread has been related to close association or consumption of animal and animal meat. During this period, it was observed that many of us hardcore non-vegetarians voluntarily decided to become vegetarian, just for as a precautionary measure. The relationship between coronavirus and non-veg has not been established, and it may never be established also. But corona or no corona, our digestive systems did receive a respite. I mean, it did get a respite from the hard work it generally had to do when we consumed non-veg diet. Again, Gandhi always advocated intake of the locally grown fruits and vegetables and the staple diet. And even in present times, there are many experts on the subject, health experts, who are advocating the same kind of combination in order to inculcate an immune, corona-free society. There are many benefits associated with this kind of diet plan, the staple diet, and the seasonal fruits and vegetables. Why is it so? Because the native or the indigenous fruits and vegetables or the crop, they have the necessary nutrients, minerals, vitamins in them, which are required by the people living in a particular or specific geographical locale. And secondly, which are generally not available in those exotic or non-indigenous fruits and vegetables. Secondly, the local farmers or the local peasants who grow these native or indigenous fruits and vegetables, they adopt time-tested agricultural practices which are eco-friendly. And it is here that we see that Gandhi's environment, conservationism and sustenance comes into play. Moving on, this COVID, starting from lockdown to the present unlock phase, a trend has been observed that now we are back to home cooking. So it's like instead of outside food, we are having homemade food. So Momino's instead of Domino. In pre-corona phase or pre-corona India, the globalized India, the 21st century India, a kind of a fad was observed by many sociologists and psychologists and other scholars of associated disciplines, that a culture of eating out, especially on weekends, had come up.
And the way it was highlighted, the whole narrative was formed that it is, I mean, the family time, and we go out and we are a family, and then those selfies are being clicked and posted on social sites. But there was so much of artificiality in that, as compared to actually, you know, having family time is having food home, having homemade food at home, which I mean, I belong to the generation of, I mean, the pre-LPG generation. That is my definition while growing up in my home. My definition of family time, having food made by my mom at home. And that was the true, you know, you would be what you are. When we go out in restaurants and other public places to have meals, the so-called family time, there's so much of artificiality. There's this element of narcissism in that. So thanks to this whole period, that, you know, that kind of family feeling is back. True family feeling, not pseudo family feeling. We don't have to create it, it is there. Then Gandhi was a very strong critic of Western allopathic system. Why? It did cure. He admitted it did cure, but it weakened our immunity. And that is why when his own son was stricken with typhoid, he used hydrotherapy. He used wet sheet packs, and that is how he brought down the high fever or temperature of his own son. And he always advocated usage of those homemade remedies, and we've been doing that. I mean, concoctions and karas have been the in thing during this COVID period. And especially now, even the health ministry is insisting on the intake of golden milk, which is what, milk with turmeric milk, and the intake of chawanprash, the basis of our own indigenous Ayurveda system. And the intake of these kind of items would increase our immunity and would help in the post-corona recovery period. Moving on, limitation of bonds again. I'll have to talk about the pre-corona period, because that is what we are doing, the pre and the present. So pre-corona, India was brimming with international brands, Gucci, Versace, Armani, Jimmy Choo. And it's interesting thing is that it's not the rich who are indulging in these kinds of comforts and luxury. The rich have always been, right? We are students of history. We know that right from ancient times, I mean, medieval times and all, the rich have always indulged in these kind of comforts and luxury. It is no surprise. But the middle class, and why? Because we came to associate our social status with the usage of these luxury goods. In fact, it was reported at many places that the luxury goods market in India was showing a steady rise, and it was supposed to grow to great heights by the end of 2020. Things changed. We got the news of, and before going into that, I again want to point out about these two terms that I have used in the slide. Consumerism. Now this again, this usage of these comfort and luxury goods and cars, latest gadgets and electronic goods and cars and clothes and satellite television, food, everything. So this is the culture of consumerism, and with consumerism is tagged the throwaway culture. Because we were buying things in excess, and then we were buying and using things which were not actually required by us, simply doing it as part of social status, and then practicing the throwaway culture. That's wastage. And that too in a country where millions are still living below poverty line. It pinches. The news of lockdown came, and initially we tried to stockpile, we tried to hoard things. And there were long queues outside the provision stores where people were busy hoarding necessities and things for them. But gradually, as and when time moved, it was difficult to go out and buy things. So we learned to live with the minimum. We could not waste anything that was there in our refrigerator. The dustbins must have become empty, hardly anything to put in the dustbin, because we were using everything.
And and then this element of cautious spending entered our lifestyle. And though now we are in the unlock phase, but especially the middle class has grossly curtailed its expenditure, especially on clothes and transport. We were the ones who were actually making these industries work, not the rich. The rich have always done it, and the poor don't enter that circle. So we, the middle class, did it. And now we have become cautious. Why? Because we need money. I mean, what if we are affected? What if it hits us? So we need money. And that is why we have become cautious. That is why, see, in the beginning only I said we practiced these Gandhian principles without consciously doing it. We were not even aware. Many of us were not even aware that we were doing it, but we did it. And maybe it was done in an unknowing or an ignorant manner, but finally the legitimate signs were on the right track. So this element of cautious spending entered, and Gandhi would have, if he would have lived, he would have loved what was happening. I mean, the way we were behaving, not what was divinely happening, but the way we were behaving or responding. Because he writes, in his autobiography and many of his writings and speeches, he had insisted on, maintaining accounts of everyday expenditure. That doesn't mean that he was what we call the Kanjus Baniya. No. One needs to that frugality, living with minimum, because there is poverty in the world. When we use when we use more than what we actually require, we commit theft. We commit theft. Remember asteya, parigraha, the concepts of Jainism, the principles of Jainism. Moving to the fourth principle, sharir shram, or bread labor. Gandhi had picked up, as the previous speaker also said, Gandhi, he mentioned Tolstoy. So Gandhi had basically picked up this principle from Tolstoy. And he advocated that everyone should practice bread labor, and especially the intellectual class, especially those who lead a sedentary life. It bridges the gap between the attitude that we have towards mental work and physical work. And it will also break the stereotype and the prejudice that we have, or the low esteem in which we keep physical work. And this kind of mindset had entered India right from later Vedic times, though the original, the propounders of the Varna system had never meant it to be so, but in later Vedic times, it had been distorted, and this looking down upon physical work, associating it with certain communities and certain people, has been plaguing India till date. Corona brought a change. Corona brought a change. I mean, we did it out of fear of contagion and falling sick. We had to ask our household help to stop coming to our homes, and we had to do all the household work ourselves. So, and this happened right from the film stars to the middle class. The film stars, the rich were able to buy out their way even in this time, even during this time. We know our friends and members of the community that I pay my servant extra, but you won't go to any other house. You will only come to my house. I'll pay you extra because I have enough money. So these kind of arrangements were also seen, but still. So right from the film stars to the middle class, as you can see in the pictures given, that everyone was into physical labor. So it was like washing the utensils, and then again, this picture I specifically, intentionally I added of Karanveer Bohra. I mean that it challenged the male patriarchy also, the macho image associated with the men. I mean, such a good-looking, handsome fellow holding a broom on his shoulder, and so confident about it. Gandhi had no qualms in being a sweeper, in being a woman, in doing womanly chores, in that kind of flexibility is inside us. I mean, leave alone the testosterone and the other part, but that is there in us. So, and then the heroine of my slide actually is, that is why I've given her more space, is Muthu Nagapan. Muthu Nagapan is a homemaker, she represents us, the middle class, the ordinary, the plebeian.
she belongs to Trichy, and what she did was that on her terrace, which was hardly like 500 square feet area, she grew vegetables. She turned it into an organic garden, and 25 varieties of vegetables were grown by her on her terrace, which supplied 90% of her kitchen needs during the lockdown. And she hardly had to step out from her home to go to the market and buy the eatables. So through her action, she had, I feel, as a student of Gandhian philosophy and values, that she had personified Gandhian bread labor. Swadeshi. Gandhian concept of Swadeshi is much, again, comprehensive. It covers the political, it covers the social, the cultural, the linguistic. But here I'm going to talk about the economic aspect. Serve the neighbor. Serve the world later on. Serve the one who is next to you. You serve him, you serve the world. So in this way, everyone is going to serve their neighbor. And that is how the whole world will be served. The whole world will be a family. So use local products. I'm going to basically talk about today the economic aspect of Swadeshi. So use local products, locally available, locally manufactured products. Even if the quality of the product is inferior, it's okay. I mean, there are so many, we as Indians, such religious people, we are so steadfast and so strong whenever we have to follow certain rituals of our religion. So can't we show that kind of firmness and steadiness and sacrifice and control, self-control, in order to benefit our local producers? Can't we compromise on the quality and help the local producer improve it? But again, Gandhian Swadeshi is not fetish. If a product is not available locally, then it can be taken from outside where it is being produced. Gandhi is never fetish about anything. COVID-19, made us visit the local kirana shops. I mean, these are my presentation is actually so experiential. I mean, based on my personal observation and what we saw, happening around, and certain reports from the newspaper, the surveys and all. Especially in the X and Y category cities, they were were visiting the departmental stores, D-Mart, Big Bazaar, and Walmart. These were the places. So leaving them aside, now we preferred visiting the local, the kirana shop or the provision store, which was closest to our house, even if it lacked the modern ambience. I hope you understand. I know you understand this thing, modern ambience, what I'm referring to over here, the modern ambience and the modern amenities, bereft of that, and still we visited because, we had to save our life. That is why. Another observation that I wish to share with you here is that India, the pre-corona India, exported nearly 4 lakh ton of fruits and vegetables per month. 4 lakh ton per month. Some other reports may give, some other data, but more or less the number will remain close to this only. We are students of history, we understand subjectivity. But still, because of lockdown, the export fell 70%. Now, when I read this, that what pinched me again, what pained me was that this is happening in a country where still children are undernourished. We have to start programs like Poshan Abhiyan to feed our children. Our children are not getting enough vitamins and minerals and food on their plate. 2 meals, 2 times, 2 meals a day. They're not getting that, and here we are exporting because we are getting more price. We are getting more money in return. But the saddest part, and people may say that there's nothing wrong with that, but the saddest part is that this profit margin, which is being made in this export, is not going to the farmer. It's not going to the farmer. It is actually going to the big corporates who act as, agents and middlemen between the farmers and the buyers, the international buyers. Is it okay? So the international buyers. So what happened that because of the lockdown, now the local traders stopped visiting the farmers. Their produce was rotting,
and their economic condition had deteriorated. Now, I wish to share two responses to this situation. First example I wish to give you is of Chandra Gowda, a grape farmer from Karnataka. So his harvest was full and abundant, but there was no buyer. So he lost, much of his produce he had to turn into compost, but he was still left with some. So what he did is that he opened a Facebook account and he advertised his produce on the Facebook, and that is how he was able to contact the customers at their doorstep. He rented a van, and then he moved about and reached the doorsteps of the people who were interested in buying grapes from him. So naturally, there is no need to say that he got much better value, which he would have got from the middlemen intervening in between, and even the buyers, the customers got it at a comparatively cheaper rate. So Gandhi, the general perception is this: he was against technology. He was not. He was never against any technology that would help humanity, but technology that would eat away the livelihood of the poor. He appreciated the Singer machine. We all know about it. Okay, now the second response. This is the farmer taking the initiative, rural India taking the initiative. The second response is that again, when the news of farmers dumping and destroying their produce reached the residents of this welfare association at Sarjapur, Bangalore, when they heard of it, they contacted the local police and took their permission. And then they contacted the farmers and asked them to come over to their apartments with the fresh farm produce and started buying from them. These are actual photographs of the Sarjapur the Welfare Association. Look at the disciplined way they are standing. If Corona can teach us discipline, it's okay. So they empathize. The urban India, this example of the Sarjapur residents, urban India empathizing with the situation, the plight of rural India. And this is what Gandhi wanted. He wanted the urban India to take the initiative to ameliorate the wants and problems of the rural, to contribute in the reconstruction of Indian villages. And the residents of Sarjapur seem to be doing the same. This is my last slide, and the thought that came to me when I was making this was Sarvodaya. But here I'm not going to get into the theoretical aspect of Sarvodaya. These two pictures of Dana Maji and patients sharing a hospital bed in the capital city of the nation. This is not what Gandhi envisioned in his Sarvodaya. This is not welfare of all. But I don't want to go into the other aspect because there's not much time. I simply want to talk about a very mundane definition or a very mundane or everyday aspect of Sarvodaya in keeping with the new normal, or what we can do as ordinary people. At least wear masks, practice social distancing. If we can't feed or serve our countrymen, at least we should not spread it. Mask we are not wearing to save ourselves, but to save others. You may find it very mundane, my saying that, very ordinary. But then if it is so ordinary, everyone knows it, then why there are advertisements being broadcasted to teach people how to wear masks? We are taking our exams, we are having our exams in our college, offline exams. And when we do the duties, we have to check the students, cover your nose. And they would be called graduates. Cover your nose. Sarvodaya. You don't have to go into those philosophical definitions and aspects and theorization. Even Gandhi never theorized much. Gandhi is called the bag of borrows. He's a superb teacher who got those complicated theories. He read it himself. He read all that himself. Got those complicated theories, and just like a benevolent mother, simplified those theories and produced those theories before the commoners, before the illiterate, ignorant, poor of India. And he wanted us, the middle class, to empathize and understand. He never said so that it is my teachings or sayings are only limited to the middle class. He never said that. But who else? But who else was he actually addressing to? So
this I wish to read. I mean, the lines that I have written, these are my concluding lines. The purpose behind discussing certain Gandhian principles today was neither theorizing the subject, we've had that enough in the previous years, right from 1947, was neither theorizing the subject nor sermonizing or preaching the policy makers, but to encourage the adoption of these values in our everyday life. And who are we? We are the plebeians, the ordinary, the masses, the prime audience, and very important, closest to Gandhi's heart and soul whenever he envisioned the India of his dream. Thank you and God bless. I think I finished right on time. It's like... Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Horrible, valuable words. Now moving towards the question answer session. We have some questions from the students. First question is for Persis ma'am. The COVID-19 pandemic crisis is multi-dimensional. The COVID-19 pandemic, eco-recession, and global warming are compounded by the void of political leadership. With the present crisis, what would Mahatma Gandhi do? Persis ma'am. Mahatma Gandhi, we hope it is, I mean, hypothetical questions are difficult to answer, but I think he would have done more or less what I have, cited through examples, that we need to, as a mass, as, the science of his legacy, understanding what he said and practicing through our small efforts. Gandhi would probably, have that kind of a mass following. He would be able to generate that. But I feel it would take, if I may answer honestly, it would take much time for him to do it, because the first part of 20th century India was is different from 21st century. We have tasted like we have tasted the forbidden apple, and so like it is different. It would have taken Gandhi much effort to take us back, globalization, comforts and luxury, and it's the the thinking, that is what Sarvodaya, thinking too much, or for our own sake, not thinking about others. That is the root cause of this whole situation, whether we talk about globalization or whether we talk about these environmental concerns. But Gandhi, to be Gandhi, would have been needing followers, and this time he would have to make more efforts to find the followers. But I'm sure he would have found, and the number would have increased. But one thing he would have done definitely is that he would never have used force, violence. No place for violence. I mean, Gandhi was ready to compromise for everything. I mean, violence, no. So we hope that even if Gandhi is not there, and again, it is not the right time to think what Gandhi would have done. He has done. He has played his role. He has given us a Hind Swaraj, and we have his teachings and writings. Now it is for the onus falls on us, the legitimate inheritors of his legacy, to actually practice it. Thank you, ma'am. Next question is for Ajit Jha sir. Question is Gandhian value applicable in all situations, or is it not applicable when we deal with criminals of heinous crimes in living world? Ajit sir. Sir, mic unmute please. I requested you, it would be better if you can read out all questions to me. And if this is the only question to me, then I may respond to it. Sir, there is one more question. Does Gandhiji believe in state socialism? This question can be answered straight way. Not in the sense we understand state socialism. Because when we talk of state socialism, we have primarily only one model, that is a Soviet model,
that was termed as a post-revolutionary society by many scholars, that was followed in Soviet Union and China. He was definitely against that kind of state socialism, but he was for the social control over the economic resources and economic wealth. Now, how that social control could have been established and practiced, but for state socialism, for that he proposed a decentralized model of economy and society. As far as your first question is concerned, I think that we have left very little time for our chair. I think chair would give some general remarks, some summary, and I leave it to chair to respond to that question also, so that he has some time to speak about Gandhi. And I'm confident he will respond to that question. And in any case, I'm in the college, student is from the college. If necessary, we can discuss that. But let us have some time for the chair. Thank you, sir. The next question is for Gajendra, sir. What is the defining moment in Gandhiji's struggle? We should kind of wind up with the questions and then utilize the time for, like, we should just go over to the chair so that he can give his concluding remarks. Okay, ma'am. Sure, ma'am. We aren't left with too much time, so Okay, I think ma'am. it would be better if we can just Okay, go ma'am. to the... Now, I would like to request Professor Salil Misra, sir, to give his concluding remarks. Salil, sir. Well, thank you very much. We've had three very important papers on three entirely different themes, but and all of them have enriched our understanding of Gandhi. Ajit Jha, I think he made a number of important points, but let me just highlight one thing which struck me, that as the world moved away politically from religion in the 20th century, we had very few political leaders in the world who were so completely and in a very self-conscious manner dependent on religion, based their politics on religion. So in that sense, Gandhi was probably the only such global leader during his times who was so consciously steeped into religion. Well, the second important point he made, of course, was this classic European distinction between faith and reason. We have all been brought up, the whole world was brought up since the 19th century into believing that there was an antagonistic relationship between faith and reason since the times of Spinoza. Either you were a person of faith or you were a person of reason. And Gandhi actually brings the two together. He says that faith has to live up to the test of reason, and reason is dry, arid, meaningless unless it is accompanied by faith. There are certain zones of our lives where reason does not work. So in a very important way, Gandhi actually brought the two together. And what better example than the title of his autobiography, My Experiments with Truth. Even truth is not something which is given to us, which comes to us from treatises and doctrines and religions. Truth is something to be experimented with, which is very much the zone of reason. So the very title of his autobiography is actually a bringing together of faith and reason. And the third important point he made was that all religions may have their limits, but all religions have their own distinctive features. Christianity has a sense of suffering, compassion. Islam has a notion of egalitarianism, no mediators between the God and the followers, and Hinduism has its own features. And therefore, life becomes extremely enriching if we might be steeped into one particular religious tradition, but we are not to keep ourselves confined to it. We should be able to reach out freely and openly to other religions and the advantages which they give us. Dr. Gajendra Singh gave us a story about Gandhi's early childhood, his South Africa, and he was basically saying that by the time Gandhi came to India, much of how we know Gandhi as Gandhi had been made. So the claim by the South Africans that Indians sent a lawyer to South Africa and they sent back a Mahatma, because many of his experiments, many of his experiences were such in South Africa that they actually came in quite handy in Gandhi's political career, political life in India. Dr. Percy Das, yes, she tried to, in a way, bring Gandhi back in the context of today. And Gandhi's own warnings
and how these days are a reminder to us about the kind of lives we have to lead. Now, present day contemporary global environment movement is also going back to Gandhi on the question of environment. They are making a distinction between shallow ecology and deep ecology. Shallow ecology is more about paper and plastic and this and that, but deep ecology is, it relates to questions of who we are, the kind of lives we lead, how much do we consume, and so on. So I think there is, even globally, a lot of the focus is going back to some of these concerns which Gandhi practiced and upheld and lived with in his times, and how this COVID, the current crisis, is actually a reminder of where we ought to be going. Finally, coming back to this question, it's an important, it's a natural question. It's more of a curiosity. Can Gandhian principles be applied to a situation of intolerance, fascism, to criminals who have no compassion in them, who have no positive feelings on them, who are primarily a burden on the society? Let me give an answer. I hope I'm given the time. This question was actually put to Gandhi in 1937. A question was put to Gandhi, or Gandhi himself said, in a situation of communal violence, when there is a lot of killing going on, can Gandhian principles be applied? And Gandhi replied, Gandhi said, if I see a madman indiscriminately killing people with a, what will I do? I cannot stop him. There is no non-violent way of stopping the man. And Gandhi said, I'll pick up a gun and eliminate him. But I will not do it with any hatred for him. I'll do it with all my love for him. It's like curing a disease. If there is no other way of stopping that man. Basically, Gandhian principles have to be seen in a very universal kind of way, not into individual situations. What is Gandhi's principle? Gandhi's principle is that all of us have an element of goodness in us, in our minds, in our hearts. Basically, we are not bad people. We are not greedy. We are not violent ridden. We are not competitive. We are not negative. All the goodness is there in us. But something has civilizationally happened. And he was referring to what people call capitalism, industrial civilization, dominant European civilization. Tagore called it European civilization. Lenin called it capitalism. Gandhi in Hind Swaraj called it industrial civilization. There is a sense in which this civilization has corrupted us. Not just us physically, but it has entered our souls. It has corrupted our minds, our hearts, and the souls. It has made some of us into violent beasts. So all the aggression, all the negativity, all the violence, it is not inherent in human heart. It is not inherent in human mind. He would not agree with Freud that a lot of this is our inner drives, that we are led to violent behavior through our inner drives. Gandhi will not agree with that. He does not think that there are these inner drives. We are capable of cooperating. We are capable of goodness. We are capable of love, compassion, brotherhood. All of it is that in us. But there is something about the system, something about the times, something about the current civilization which corrupts us, which turns some of us into beasts. Some become very competitive, some become very ruthless, some become very ambitious. Therefore, Gandhi is working at a global level. He is a utopian. Utopias are not practical things. He is very ambitious. He has an ambition not just for India, he has an ambition for all world. That we would be able to enter the real modern world, which would be free from greed, violence, hatred, negativity, aggression, competitiveness. We should all be able to live together as fellow humans beings with love for each other. We should be able to enrich each other's. India and America should be able to enrich each other. India and China, countries, civilizations, human beings, societies. He did not see negativity as inherent in us. So Gandhi has to be seen at that level, not at the level of individual behavior, not at the level of community behavior. Gandhi is a utopian. He has an ambition not for one or two people or one or two societies or countries, for the whole world. Whether Gandhi's utopia is possible or not, we do not know. I do not know. Whether Gandhi's utopia is desirable for the world, who would disagree? Who would say no? Of course, we want a world like this. Gandhi has a framework. But it's not easy. It's, after all, an utopia. No utopia is practical. No utopia can be easily implemented. We are all very complex people. We are made of very complex situations. Countries are grown out of very complex historical situations.
They cannot suddenly be turned into cooperating agencies. But it's a very, very important utopia. We do not know whether Gandhian principles will work. But what we do know is that if they do not work, nothing else works either. There is no other philosophy as of now, no other practical philosophy which would work. So, in the 20th century, 21st century, a century of competitiveness, violence, war, greed, ruthlessness, consumption, consumerism, Gandhi is our first hope, our last bet, and our first hope. I think I will stop with this. This seminar has been extremely useful. Thank you very much. Thank you, sir, for giving us your valuable time and help us to exploring our horizons of knowledge. Thank you so much, sir. Now, coming towards the end of this wonderful informative session, I would like to request Iswa sir to conclude the session with vote of thanks. Iswa sir. सत्यवती कॉलेज हिस्ट्री डिपार्टमेंट की ओर से आयोजित गांधीयन वैल्यूज पास्ट एंड प्रेजेंट इस वेबिनार में समस्त पार्टिसिपेंट का मैं एक बार फिर से हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि आप सबने इस प्रोग्राम को सफल बनाया। मैं विशेष तौर पे हमारे चेयर डॉक्टर सलील मिश्र का आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस सेमिनार को जिस तरीके से आयोजित करवाया, इस संवाद को बनाए रखा और बाद में जिस तरीके से कंक्लूडिंग रिमार्क के माध्यम से जिस तरीके से आपने समराइज किया और आपने अपने शब्दों में बताया कि गांधी इस 21वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के बाद के इस आपाधापी के दौर में एक आशा की जो किरण है वो आज हमें दिखाई देते हैं और गांधी किसी एक व्यक्ति या एक समाज के लिए नहीं, पूरे संपूर्ण विश्व, संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए एक महत्वपूर्ण आशा की किरण है। तो सलील मिश्र साहब का मैं एक बार फिर से हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने समय निकालकर हमें उद्बोधन दिया और इस ज्ञानवर्धक और इस यूजफुल और इंफॉर्मेटिव इस वेबिनार को आयोजित करवाने में हमारा सहयोग दिया। इससे हमें निश्चित तौर पे एक महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त हुई, साथ ही हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक महत्वपूर्ण साबित हुआ। इस वेबिनार में हमारे महत्वपूर्ण वक्ता के रूप में, उद्बोधनकर्ता के रूप में मैं आभार प्रकट करता हूं डॉक्टर अजीत झा साहब का, जिन्होंने अपने उद्बोधन के माध्यम से यह बताया कि गांधी ने किस तरीके से, गांधी के जो मूल्य है, गांधी का धर्म, ईश्वर, आध्यात्मिकता के ऊपर जो विचार है, किस तरीके से गांधी ने उनके बारे में अपने विचार रखे या उनके विचार किस तरीके से पल्लवित हुए। उनके माध्यम से आपने जो संवाद हमारे सामने रखा वो निश्चित तौर पे हमारे लिए एक यूजफुल साबित हुआ है। साथ ही डॉक्टर गजेंद्र सिंह ने गांधी के अफ्रीकी प्रवास के दौरान वहां गांधी के संघर्ष, वहां अफ्रीका में जो गिरमिटिया मजदूरों से लेकर के वहां के लोगों के, अंग्रेजों के या पश्चिमी सभ्यता के साथ जो रंग भेद और जिस तरीके से जो संघर्ष हुआ, उनको किस तरीके से उनके जो विचार है उनको पश्चिमी विश्व ने प्रभावित किए, या जो टॉलस्टॉय से लेकर के कई सारे जो उस समय के जो भी विद्वान थे उन्होंने जिस तरीके से प्रभावित किया, उन सब बातों को आपने हमारे सामने रखा। साथ ही अंत में हमारी पशिश दास मैडम ने जिस तरीके से कोविड के टाइम में गांधी जी के जो मूल्य हैं, जो सिद्धांत हैं, जो दर्शन हैं, वो कितना यूजफुल हो सकता है, क्योंकि वो हम इस दौर में हम देख रहे हैं, जी रहे हैं कि उन मूल्यों का इस समय भी कितना प्रभाव पड़ा है, चाहे वो स्वच्छता से लेकर के, चाहे शरीर श्रम से लेकर के, या स्वदेशी और आत्मनिर्भर की ओर बढ़ने के जितने भी जो आयाम हैं उसमें गांधीवादी मूल्य निहित है और गांधीवादी मूल्यों को अपनाया जा सकता है। और आज भी उन मूल्यों से ही हम एक संपूर्ण, एक कल्याणकारी विश्व की एक कामना कर सकते हैं। मैं अंत में मुझे अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक वक्तव्य याद आता है। उन्होंने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां इस बात पे विश्वास नहीं करेगी कि इस धरती पर कोई ऐसा हार्ड मांस वाला इंसान भी चला होगा। तो गांधी जी के जो मूल्य, गांधी जी का जो दर्शन, उनके सिद्धांत, उनकी शिक्षाएं आज भी हमारे लिए यूजफुल है, बशर्ते हमें उसे समझने, उसे व्यावहारिक तौर पे उतारने की जरूरत है। मैं अंत में एक बार फिर से हमारी कन्वेनर डॉक्टर पल्लवी प्रसाद का आभार प्रकट करता हूं कि इस वेबिनार को आयोजित करवाया और हमारे स्टूडेंट्स यूनियन के बच्चों के साथ बैठकर मीटिंग कर और इतने महत्वपूर्ण प्रोग्राम को आयोजित करवाने में हमारे डिपार्टमेंट को योगदान दिया। थैंक यू सो मच। और अंत में यह सब प्रोग्राम हमारे प्रिंसिपल मैम के प्रोत्साहन के माध्यम से ही सफल हो सकता है। और इसी के साथ इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेंट के तौर पे हमारे टीचर्स, कलीग्स, हमारे डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक आभार और धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Thank you, Iswa sir. Thank you all the speakers for be there with us and all the participants for joining us.
I think जिन भी बच्चों ने अपने questions लिखे हैं, we will be in a position to answer back those questions through the WhatsApp group that has been created. So questions answer हो जाएंगे, that will not be a problem. But because of paucity of time, we thought that it would be better that if we could hear out some valuable words from the speakers. So maybe the questions can be answered. And again, on behalf of SHASWAT Society, I want to thank all the participants and all the speakers for their insightful lectures. And last but not the least, the students of the SHASWAT team who have worked tirelessly to make this program a success. So they also deserve a big thank you for making this program a success. So thank you. Thank you, ma'am. Thank you, Pallavi. So I think we can end the meeting now. Yes, we can exit. So Avinash, One by please. Okay. Thank you very much, Pallavi. Thank you very much for the wonderful webinar. We must thank Mridula also for joining and being with us throughout. No, sir. I want to thank you. History department ke to log hai hi, but somebody coming from the other department, it really gives us a big boost. It's always a pleasure to hear interdisciplinary lectures, and this one was extremely beneficial. And even the lecture which you gave the other day, thank you so much. It was a wonderful experience. You must thank Pallavi, who was responsible for organizing this program, and the students, Saurabh and Avinash and others. Yes. Ishwarji is always, his name is Ishwar, so he's always there. Abhishek ji, Hemlata, they're all around. Yes, sir. Congratulations to all the students for a wonderful effort and amazing seminar. Thank you so much. It was such a pleasure. And it was just absolutely the right thing at the right time because of Gandhi Jayanti tomorrow. Thank you so much. Thank you, ma'am. Bye-bye. Now we end here.